but it is definitely helpful if you learn about how to rescue someone, from quicksand, how to rescue someone from when they are drowning, how to rescue someone, how to save lives when there is a situation of fire, how to give CPR. Writing a stories. So the story writing format must be in past tense. The story must be completely in past, because what so every work is God's work. Okay. So, beginning with the art of story writing, today's session is going to be primarily focused on that how we can write better stories and how can we manage time pressure in TAT. So, first of all, let's start with the instructions for PPDT and how to write stories, which are the original instructions given by the psychologists or in the SSB. So, it goes like, gentlemen, it's a test of your observation. Okay, there you have to observe what is there in the picture, and then after observing, you have to perceive. That is called perception and imagination. After giving some meaning to your observation, that is perception, then you have to imagine certain things with using your perception. In that perception, you will include characters, you will include resources whichever available, whichever are there in your picture. So using the imagination, you will be forming a story. Okay, so let's move ahead. And we have here in this test you have to write a story bringing out what led to the situation. That what is whatever the situation given is the picture, you have to write what led to the situation, then you have to write what is going on in the picture. Okay, then you have to write what is going on in the picture and what the outcome will be. So like there are three phases for any story. First, you have to write what led to the situation, whichever there is present in the current picture, and what is going on in the picture. Okay, and you have to explain it. Then you have to tell what the outcome will be, whichever actions were taking place in the picture. So, what will be their outcome? You also have to mention these instructions are particularly for PPDT. So whatever story part included was observation, perception, imagination. Okay, where observation was to observe the picture which was given as a stimulus, and perception that we were giving meaning to the given observation. Yeah. Okay, sorry for interruption. Am I audible now? So tell me when did I got disconnected? Where were we earlier? Anyone? Unmute yourself and please tell. Yes, yes, bye. Yes, in this test you have to write. Okay. We have just started the instructions. Okay, yeah, so in the instructions, if we deep dive into the meaning of these three words, that is observation, perception, and imagination, we come to understand that we have to observe the given stimulus and we have to give certain meaning to the given stimulus by using our mental knowledge, whatever cognitive ability what we have, and then after giving that meaning to the given stimulus, we will observe the picture, we will make a perception of the picture, and then we will use our imagination and the given resources, characters in the picture, and will make a story out of it. So the next line says, in this test you have to write a story bringing out what led to the situation, what is going on, and what the outcome will be. So the story have three parts: what led to the situation, and what is going on, and what the outcome will be. What is going on will majorly come from the given picture, and what led to the situation
will come from our imagination, and the outcome will also be coming from our imagination. So we have to focus entirely on observing picture correctly, so that we'll make a good ladder situation, what is going on and what the outcome. So these three parts need to be made very much focused on what given picture says to us. Okay, so the further instructions are specific for PPDT. So how to write story majorly in what is going on, this is the particularly question which is asked by candidates most of the time. For that, you just need to make a story which revolves around what has been shown in the given picture. So from the instructions also we have understood that fact that whatever the picture is shown to us, we have to observe it well, and we have to base our stories what is going on. We have to base the present of the story on what is shown in the picture. So is this point clear to everyone? Is anyone having any doubt that what is going on in the picture? इसके regarding कोई भी doubt है? No one. Great. So let us move ahead and see and understand what thematic perception test looks for. So the requirement of the test is you have to have mental stamina, and it's not mental stamina that where you have to use your conscious mind and where you have to solve mathematical problems. And as you know, like first let me tell you what is a TAT test. So basically in a TAT test, it is a first test of a psychological process, and it have a weightage of 70%. It have 70% importance out of those four tests which are there in the psychological testing in SSB. So it is a really important test, and in this there will be 11 pictures shown to you. Let me tell you how sequentially will the pictures be shown. Like first picture will be shown to you for 30 seconds, then you will be given 4 minutes to write a story. Then after the culmination of those 4 minutes, next picture will be shown to you, the second picture for 30 seconds, and 4 minutes will be given to you to write the story. During those 5 minutes, nothing will be shown on the screen in front of you. You have to just focus on your seat and write. So this cycle goes for 11 times and 11 pictures, and you have to write 11 stories. After the 11th story you have written, there will be a blank picture in front of you. The blank picture means that it says that you have to imagine a story by you have to imagine a picture by yourself and perceive that imagined picture, and you have to write a story on that blank picture. Okay, so that's the concept of 12 stories, and this activity takes place in around a period of 55 to 56 minutes. Okay, so this is a pure creative writing for 55 to 56 minutes, and this 55 to 56 minutes requires creative thinking. So whenever you are thinking creatively, actually your brain is like your brain get absorbed, and your mental capacity, and you will be getting mentally fatigued. Your physical hands, your handwriting, your hand will be also paining because of physical pain. So all this comes, and all this brings out the subconscious responses, the subconscious stories from your brain. So you need to have mental stamina, so that you will produce, so that you will create new stories for those 55 to 56 minutes. And you can create that mental stamina, you can practice, and with time it will be built. And mind it that it is different than conscious thinking, where we solve mathematical questions for 2.5 hours. That is completely different. And creating something, creating stories using our imagination is something different. Okay, so you have to have a creative mind, an imaginative brain, good knowledge of basic working of the society and the organization, so that you will be able to perceive those pictures and connect with some constructive activity which happens in the society or the organization or in the country or in the bureaucratic world, or how politics work, or in general municipality work. Anything, any activity, you should be able to relate, and you will be able to relate only when you have basic knowledge and good knowledge or practical knowledge of your surroundings. Now it's spatial because it is
55 minutes long. There is time constraint to write it fast. As difficult it is to fake in this task, it makes it as critical too for assessment. It's the first psychological task in hand and the most important one. You all have must heard this saying which says that first impression is the lasting impression. You know, first impression lasts for till the end. So you have to give due importance and you have to perform really well in this task. And as I have told earlier, it has a 70% weightage. So and also one more thing, during this upcoming 2 hours or 1.5 hours that we are going to discuss about story writing and TAT, I would like to give credit. First of all, whichever wrong advice and whichever mistake which I am going to commit will be I will be entirely responsible for that mistake. I might have learned things differently, and it is completely based on my experience. And whatever good things, whatever insightful things which I am going to share with you and tell you the tips about, it is all because of my mentors who have taught me about SSB. It is all because of my friends that we have discussed about ideas, and I have taken many advices for the formation of these notes also from my recommended friends. And I have also, like, if someone is asking in the chat section, let me give you a brief introduction about myself, that I have been a failure and a success in multiple times given certain contexts. So I have been to SSB gate for 6 times. I have got screen out, I have got conferenced out, and I have also got recommended and secured all India rank 128 in ND 150 course. So it's not that that I have only seen success, but I have also seen failures and getting conferenced out and screened out. So I know what mistakes to avoid and what tips and tricks and what right strategy to follow. Again, I am repeating the fact that whichever mistake or whichever wrong advice I am going to give you by mistake, it will be my whole responsibility. And if even a little piece of good advice which will be coming your way, I give the credit to my mentors. I have been taking coaching for SSB twice, and I have been discussing with my friends and assessors all these ideas. And I have also taken many, learned from many YouTube videos and soft skill videos and philosophy and spirituality. Anyway, so let's discuss further about the introduction of TAT, that is thematic perception test. It was created in 1930s by Harvard psychologist Henry Murray. It involves a picture interpretation technique. Text takers are shown ambiguous pictures and asked to create a story for the picture. Ambiguous picture, you know, ambiguous means that which have a dichotomy or which have a duality in the meaning of that picture. It's a projective task as pictures are projected in front of candidates. So now focusing on what affects us and what is very relatable to us, candidate story may include what has led to the event shown in the picture, what is happening at the moment, what the characters are feeling and thinking, okay, and also doing, what the outcome of the story was. So this will be the story, and first let me tell you some basic concepts, basic tips that you all have to perceive the image, and when you will be writing your stories. So the story writing format must be in past tense. The story must be completely in past, because what is a story? Story is a narration of a past activity which we do to other people. Like हमें नानी दादी कहानियां सुनाया करती थी कि एक राजा था, जंगल में जा रहा था, ये हुआ वो हुआ. तो ये सब हो चुकी हुई बातें हैं, तो हमें स्टोरी को हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है. जो हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस रेस्पेक्ट में नहीं है कि हम वो टेंस यूज कर रहे हैं. वी आर रेफरिंग टू द current picture which was shown to us, and we are referring to as the picture shown to us as origin, and taking that origin, हम negative में जा रहे हैं तो हम उसे past बोल रहे हैं, अगर हम positive में जा रहे हैं तो हम उसे future बोल रहे हैं. For the better understanding, in the instructions also it is mentioned as जो picture दे रखी है वो उसमें हम बता रहे हैं what is going on in the picture. और picture से एक मिनट रुकना. Okay, sorry. So there was some person outside the gate. So where we were discussing that what is past and present and future,
with respect to our story writing. So first of all, make this thing clear to everyone that whenever we are seeing past, present, future, we are not talking about the tense that we have to use in story writing, but we are talking about the reference, that what we are taking the reference to the situation shown. So for the better representation, it is also the three terms which are used in the instructions are really good, that what has led to the situation, what is led to the situation in the picture shown, and what is going on, which is the current present situation given in the picture, and what will be the outcome of that particular action which we were taking in the present of the story. So as you know, the original picture is giving us what is going on in the picture. So it is the most important part of the story, where we can take actions using the characters and using the mood, the feelings, the thoughts, the body language, the attire of the characters which were shown in the picture. And after taking those actions, there will be certain outcome will be coming, and for taking those actions, for being in that particular situation, there need to be a background. So you have to set up the current situation, and you have to make a intro or the background or the what led to the situation in the story also. Okay, so till then, if it is clear, then let's move ahead. Okay, so let's now discuss that how assessment of TAT occurs. I'm not a psychologist, but still we are going to discuss it. The candidate's performance is assessed using the following parameters. First, the character identification. Which character is identified as the main character by the writer, by the candidate? What is the theme chosen by the writer or the candidate who has written the story? The theme is important because theme reflects the ideology or the intent of the candidate, whichever goals he want to pursue in his life. Purpose of the hero in the story, the problem, goal, or aim, what he sees as a problem, or what he wants to make a goal or a aim of his activity, of his actions, for what problem or for what goal or for what aim the candidate will be taking certain good actions. What is the approach towards that problem? Is that problem solved using taking help, or is that problem solved only not by taking help? So both are the extremes and both are wrong. We have to balance we have to strike for a balance in between, that where we will be taking help from people and we will be also doing things by ourselves, because taking help will show us as a as a team person, and doing things by ourselves will show us as a ambitious, as a hard working person and a confident person. And conclusion, how do the candidates conclude the story? How has the writer of the story concluded the story? Is it a pessimistic conclusion? Is it a optimistic? Is it a overly optimistic? Is it a wishful conclusion of the story, or is it realistic, pragmatic and optimistic conclusion? So all those parameters are also being taken in consideration. Psychologist also checks your physical and mental stamina throughout the test by noticing the length and the quality of your stories. For example, your first and second story may contain 12 to 13 lines, but your last story, or let's say 11th, 7th, 8th story includes only 7 to 8 to 9 lines. So it tells you that you are mentally getting fatigued. And even just it's just not about the number of lines, it is also about the quality of the story. How is the candidate consistent with the quality of the story from the first to the 11th story, because 12th story is most of the time premeditated. So this is about assessment of TAT. Now we will discuss each and every aspect of story writing, that how to observe the picture and how to go ahead and take actions. So now first discussing about the observation of the picture. So whenever the picture is there in front of you, so you have to just observe it for complete 30 seconds. Do not rush. Do not. We have also talked about this aspect in our
yesterday's session where we have talked about observation and being a scene and completely accepting and immersing your attention into the picture. So what particularly you have to find out in the picture, you have to see the number of characters. In TAT, the pictures will be more, they will be not blur and hazy. So you have to see the body language of the characters and as well as the attire which they are having, and also their expressions. And as we have already talked about body language, so their like postures will tell you in what situation they are. Are they tensed? Are they excited? So these are things you can take idea from uh, looking at the body language of the characters. The age, mood and gender, you have to see that also you have to see the background of the picture shown, which are what are the current resources available in the picture. Is there a piano, is there a pen, is there a table, is there a car, is there a bike, is there a ground on which people can run, or the ground can be cleaned. So these all background also you have to observe really carefully. You also have to observe the task in which the characters are involved, either as individuals or as a group. Okay, what does this line means? That most of the times, whenever a picture is shown, the characters must be doing something, like they are discussing, they are talking, or they are distributing something, or they are doing certain tasks like collecting blood from people, like taking blood samples, or doing health checkups, or it can be anything. So you have to also observe in what task or in what body posture are they currently, and whenever you see certain situation or activity, you have to immediately think about that. When do it happen in our real life? When do it happen in real world, that people are sitting like this in a certain posture? There is a table, that a person is having a stethoscope around his neck, another person is sitting a little tired, his body language is a little conserved. So that means that the person can be a patient, the other person having stethoscope can be a doctor. Or let us say if there are two person wearing a suit, like the proper coat pant, and they are discussing about something, so it can be a discussion of a business idea, or it can be a discussion of some government policy. So you have to basically observe what the task they are involved in. But it can be also one more thing, that some people are cleaning some space. Okay, and it can be also like in my SSB there was a picture. It was हाथ था और ऐसा लग रहा था हाथ में कुछ ऐसे गांजा वगैरह या फिर ऐसे कुछ टाइप का पदार्थ है, और एक स्टिक है, मतलब काइंड ऑफ सिगरेट, या फिर जिसमें शायद पाइप होगा जिससे स्मोकिंग या फिर इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। तो सिर्फ उस पिक्चर में हाथ था, वो पदार्थ था और वो पाइप था। सो आप ऐसी पिक्चर्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एसएसबी। So these all situations are there to test that what you will perceive and observe and how will you tackle those pictures. Yes, now let's take doubts. Let me first see the chat section first. सचिन भाई, आपने किस एंट्री के लिए अप्लाई किया है? अभी किसी एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया। आई मीन बीएससी ग्रेजुएशन। हाउ टू राइट a TAT in what format? For example, in PPDT we write in box, action, story. Same like what format for TAT? हाँ, तो TAT के लिए आप जैसे इमेज आपको एज बतानी है कैरेक्टर की, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, रोहन 18, फिर उसका काम, और फिर आप जो सिंपल जैसे स्टोरी लिखते हो वैसे लिख सकते हो। हेमंत जी। यस अंकित, यू कैन आस्क। Okay, Sachin, so you were talking about the experience level. Yes, definitely we can make, and that is also like very an idea where you are not like what should I say, जो हम स्टिमुलस को इग्नोर कर देते हैं ना, हम भागते हैं,
आप भाग भी नहीं रहे हो, आप उस चीज को टैकल भी कर रहे हो, and it is in a positive way. That can work according to me. So, any other doubts? Anyone? Yes, Rahul. Okay, so the whole concept of leadership qualities and leader word you have mentioned it quite a few times. By the way, जब मैंने ये notes बनाए तो मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया OLQs क्या होती हैं और leadership qualities क्या होती हैं. तो भाई देखो, डोंट ट्राई टू फेक. हाँ, आई वुड से ट्राई टू राइट गुड स्टोरीज. गुड स्टोरीज क्या होती हैं, एंड ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन. When you will become a good person and a good human, you will automatically become a leader. A leader is who? A leader is one who is striving always for the change, and who is striving for a positive change, who is taking help from people and giving help to people whenever required. And it's about when it is come when it comes to writing stories and using good concepts and writing on good idea and good idea story or society based story. So it is not a prerequisite that you must have been involved in same kind of activities that they must be present in a PIQ. No, bro. You just have to use your imagination. That's why it is written as imagination, not as your memory. You are not using your memory. Okay, you are using your imagination, and in that imagination, you can fly, you can swim, you can dive, you can mountaineer, and you can do anything which you want. Okay, so it's completely fine and okay. And yeah, it is good if you are writing story or related to your PIQ. Yes, it shows that you have been involved in the uh, you have been involved in those activities which you have mentioned in the PIQ, and you are passionate about it. That's why those stories are also coming out in the TAT. So it's fine if it is happening, it's fine. But it's not like that it's a foundation that you have to just write stories on your PIQ. I hope I'm clear. Yes, Hemant. Great. Hemant. No, no, no. There is no requirement and there is no instructions to write a theme. You have to just write a story. In the beginning, you can write the name of your main character and then the age, and then you can start. Yes, Jitendra. जय हिंद भाई. ऑपरेशन मतलब जो फौज में जाके ऑपरेशन करते हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अच्छा. ओके. I feel bro having this kind of premeditative intentions to write in TAT. I don't think that this will serve us better because pictures can be different and your stimulus, like the stimulus, when the stimulus is going to be different, your response is definitely going to be different. So how you can define earlier that I will be writing operational stories or administrative stories?
Yes, I have. Yes, I am aware about a concept that long-term goals or short-term goals. I was reading a book by a psychologist in which he mentioned that in military leaders need to take quick decisions as well, because when bullets will be flying, you cannot take a decision after 5 years that, oh, okay, when this kind of activities do, then we will do this. No, no, no. You have to take quick calls, and you have to like do ऐसे मतलब बेस्ट सोल्यूशन नहीं निकालना तुम्हें, ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिससे काम चल जाए और बातें जानने बच जाए. ओके, एंड वी हैव आल्सो वन मोर recommended candidate with us, Ashwini bhai. Do you have any suggestion or point to add? First, 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 bhai, please introduce yourself. Same. Possibility of supervision of that construction of road, and that road was carried out within 1 month or 2 months, and people were feeling happy of that. After finishing the construction of the road. So this kind of story can be termed as a long-term wishful actions, as well as it takes so long. So that can be called as the administrative story. So operational stories में हम ये include कर सकते हैं कि जैसे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ये भी बोला था कि वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है. So because if somebody is going to a library at the time of evening and found that if some accident has taken place on the road, and simultaneously that individual is in a need of immediate rush to the hospital. So that cannot be an administrative story. उसको हमें शॉर्ट टर्म में ही काम खत्म करना है कि उसको उसके सबसे पहले इंक्वायर करना है और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढना है, तो उसी में सारे एक्शंस जो है ना विद इन आधे घंटे के अंदर अंदर सारे एक्शंस हो जाने चाहिए. सो दैट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेशनल स्टोरी. सो ये कॉन्सेप्ट इट इज आल्सो वेल टर्म्ड बाय सचिन कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज किया, दैट इज बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. थैंक यू सचिन. You can go ahead please. Yes Ankit please. Okay, bro. So you are for the service entry or OTA entry that time? Okay, so okay. So you are not with the OTA aspirants. No, earlier at the beginning I was a aspirant of NDA. There was I was a aspirant of LCS preparatory, then ACC, then SU, and now I am a aspirant of PCC. Okay, so service entry got also like merit out, है ना? Yes, yes. There are actually in PCS there are certain vacancies as per the category as well as grade of the individual in which that person is serving right now is the unemployed. Okay, you can tell. Okay, you can tell me one more thing. Okay, you were saying something. Please continue. Hello. Please take over. Okay. So I'm saying that I was saying that will they also include services entries in OTA? Like while making the list for the OTA, who are like cleared the SSBs for the OTA entries. So will that list also include services entry? No. Okay. Thank you. Sachin, go ahead please. Thank you so much, Steve. Yes, and please, bro, keep on adding points whenever you have. Raise your hands and we'll speak. Sure, brother. Yeah. Pratik, you have anything to ask? Pratik? Okay. Hemant? Yeah.
I Yes. have one small doubt. So some people will get confidence in and at last in the final merit list, so their name will not be. So how it's possible? What? Some people get confidence in, so that means at the up to the last stage they will be, and after the final list their name will not be. So how it's possible? It is because of the merit list. You can understand it later. So let's now bring back our discussion on story formation, and we were observing the picture. So after we have observed the picture well, so this is about observing the picture. Now let's discuss about hero identification. So the first character which is mentioned by the writer in the story is most of the time considered that it is the hero or it is the protagonist of the writer of the story, and the protagonist's action and the qualities will also qualify for the character of the writer, and as well as those characters who are not negative characters in the story will also sometimes qualify for the characters and for the character or the quality of the writer. Okay, the hero should be a person who can solve problems or achieve goals. Okay. Hero should be a person who can take actions and achieve goals. Means, what do I mean from this? Is that hero should be a person who is in a situation in which he can take positive and constructive actions and can improve the current situation. Like, for example, if there are two characters in the picture, one character is getting victimized and other character is free, then the other character must be your main character, and it is my advice that if we will make the other character as our main character, we'll be able to take certain actions. Okay, otherwise if we are getting victimized, then we will be limiting our actions, because अगर मान लो अगर आप दो कैरेक्टर है पिक्चर में, एक पानी में डूब रहे हैं एक बाहर खड़ा है, तो अगर हम पानी में डूबते हुए कैरेक्टर को खुद का कैरेक्टर बनाएंगे तो हम एक्शंस काफ़ी कम लिख पाएंगे। अगर हम लिख भी रहे होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ दिखाने में, उसमें यही बता पाएंगे कि हम खुद को विक्टिम के साथ रिलेट करते हैं। अदरवाइज अगर हम दूसरे व्यक्ति से खुद को रिलेट करेंगे, उसको अपना प्रोटैगनिस्ट बनाएंगे, तो उससे हम दूसरे की कैरेक्टर की जान बचा पाएंगे। हम ये बता पाएंगे कि हम एक प्रॉब्लम सोल्वर हैं, हम प्रॉब्लम में इंडल्ज होने से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करने में विश्वास रखते हैं। So now coming over to the third point, giving specific name to the hero. And now this is one point, and this is also doubt of the freshers most of the time, that they tend to name all the characters seen by them in the picture, which most of the times confuses the psychologist. So you must focus on naming one character only. Okay, and naming that one character will mean to the psychologist that it is your protagonist. Okay, the one character which you have named. The gender and age should be preferably of yours. Now this is a partial statement which is only relevant and applicable only in some situations. Not in all pictures you will be able to write stories on your own gender and age, and also you can write definitely on other gender and other age people also, as per me. But most of the time whenever it is convenient to do so, then please go ahead with the gender and age which is around of your age and which is of your gender. Mood can either be positive or neutral, but not negative. Though there are some conditions where you can consider your main character of your opposite gender, like there are two conditions. There is no character shown of your gender in the picture, then you can consider that the main character is of opposite gender. मैंने फीमेल पता नहीं क्यों लिख दिया, लिखते टाइम मुझे ये लगा कि सब मेल ही पढ़ रहे होंगे मेरे नोट्स. Anyway, sorry for that. In the second scenario, male character is not in a good position in the given picture. अगर दी हुई सिचुएशन, दी हुई पिक्चर में मेल कैरेक्टर एक ऐसी सिचुएशन में है जो नेगेटिव है, तो हम दूसरे कैरेक्टर दूसरे जेंडर को भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन. वी आर humans first, then genders, then caste,
and then all that things come after that. So now let us give more emphasis on the first point, which was mood either can be positive or neutral but not negative. Why not negative? Negative mood says that you are in a spiral of negative emotions, negative thoughts. So whenever we have come across in such situations in our lives, and whenever we used to start getting negative emotions or thoughts, so we have noticed that whenever we have emotion, they are most of the time in spiral form. If we are having negative emotions, so the negative fear will get piled up and the spiral will grow, and you will be having lot of negativity and lot of negative reasons to not take actions, but only to take fear in your emotions and in your mind. Whether if we are having a positive emotion and a positive mood, then most of the time what happens, we are optimistic with taking actions, and whenever we are positive in lives, so more and more positive reasons will keep on adding, and it will become a spiral, a big spiral, and a big pool of reasons which will allow us and which will enable us to take actions confidently. Okay, so this is about being positive or negative. Now in certain situations we cannot be positive all the time. Like if someone is dying, then how one can be positive? है ना? It's hard to imagine if some man is a positive, except he is a complete saint, which is not the case with us, because we are experienced and we are by name we are experienced, so we are hoping something. So we'll be having goods and bads in our lives. So we can be neutral at times. So why neutral? Why neutral? Neutral is that situation in which we are not taking that emotion inside us. Okay, so being neutral in situations like death, in situations like emergency, can be a good way to go. This is my advice, you can follow yours, whichever makes sense to you. So the next point is crying must have a reasonable and normal reason. If in the picture shown, and if you are relating to the person who is in a crying position, then that crying must be having a good reason and should be a normal reason. Okay, like crying for someone's demise, okay, is normal, is reasonable. Next point is proactive in taking steps, future ready. So whenever the hero we are taking, so the hero's actions must be in a certain manner that he is not making जुगाड़s all the time. वो जब किसी प्रॉब्लम सामने आई तो प्रॉब्लम की जुगाड़ नहीं करेगा, वो फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन भी करेगा. अगर जुगाड़ कर रहे हैं तो फ्यूचर रेडी भी सोचेगा, फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा, लॉन्ग टर्म का सोचेगा. ठीक है, उसकी तरफ देखते हुए एक्शंस लेगा. आई एम नॉट सेइंग कि लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करना वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्टोरी लिख रहे हैं 12 लाइन की, 8 लाइन की, और उन 8-12 लाइन में 110 वर्ड में हम एक 5 साल में मतलब 25 साल की जर्नी कवर करके भारत को विकसित भारत कैसे बना सकते हैं 12 लाइन की स्टोरी में? बना सकते हैं? नहीं बना सकते. हम अपने गांव को स्वच्छ बना सकते हैं 12 लाइन की स्टोरी में? बिल्कुल बना सकते हैं. वायबल है, रीजनेबल है, हम उसके एक्शंस भी लिख पाएंगे अच्छे से. विकसित भारत बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्शंस लिखने पड़ेंगे, पूरा डोजियर भर देंगे तो भी शायद 25 ईयर का पॉलिसी प्लान नहीं बनेगा. ठीक है, दैट इज द रीजन. Crime must next point is proactive in taking steps. So we have to be future ready, and our actions must align with the future program. Like whenever we are cleaning and we are separating our dustbin, like green and blue dustbins are there, so it is saying that we are thinking about the climate, we are thinking for the greater good. Protagonists should have positive attitude towards others. Never put someone who is in your close relationship into trouble. It's safe to consider a college mate or stranger to be in the situation of trouble. Sorry, but it's a point that we have to face. That protagonist must be having a positive attitude towards other. We cannot make our friend to drown every time. If we are passing by somewhere, like if, for example, if there is a story that we were passing by a bridge and we saw a person drowning, so it do not have to be our relative or friends all the time that they have to drown, because it will say that you somewhat in your subconscious mind thinks yourself as a hero, that who will be rescuing everyone, who will be rescuing your family
and they all are weak. The relatives and the people whom you are related to, they are weak and they need you to help. So it need not to be in a situation, and also it will say another thing, that you will only save that person if they are there, if they are your relative, otherwise you won't save them. So it is my humble suggestion that please make victims your as strangers, or it's, I'm not saying strangers, but let me use a different word or term. Make those persons as fellow humans, just humans. Okay? And they are human, you are human, they are life, they are being, that's why you save them. Simple. No other reason is required. Next point is, yes, any doubts? Yes, Kapil, you may speak. हाँ. जैसे हम स्टोरी बनाते हैं, जब हम नेम को किसी जो प्रोटैगनिस्ट होगा, हम 12 की 12 स्टोरी सेम नेम यूज कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, बट मैं कहूँगा 12 नेम यूज करने में क्या दिक्कत है, 12 तो दोस्त होते ही हमारे पास. यूज 12 नेम्स other than your name. Okay? Okay, Chetak. एक हमारा victim was there in the crime scene, sir. We think like our protagonist is there in the crime scene. The victim was suffering from the is there in crime. Someone was beating him up. Okay. The हिंदी में बताओ भाई, थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है मुझे. हेलो. हाँ भाई, हिंदी में बताना प्लीज. हाँ सर. अब हीरो के वो बाहर के लोगों कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो हीरो के कोई हेल्प सीख करना चाहिए, या वो हीरो के क्या करना चाहिए सर? हाँ ठीक है, क्राइम सीन है और एक और विक्टिम है जो क्राइम में विक्टिमाइज हो रहे हैं, उस पर क्राइम हो रहा है, ठीक है, और हीरो होते हुए हमें हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? यस. पूरा ग्रुप अभी हमारे जो बंदे खड़े हैं वो कोई हेल्प लेने नहीं आ रहा है, हम हीरो के प्रोटैगनिस्ट के क्या करना है उस वक्त? नहीं, पिक्चर में दिखता थोड़ी है कि कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा है. बाकी हम ये देख सकते हैं, अगर सब स्टैंड स्टिल है और यहाँ पर जैसे पिक्चर में कोई दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झगड़ा कर रहे हैं, फिर मारपीट आई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट चैट अप करेगा और उन्हें रोकेगा. Seeing him, other people will also join, or he will ask other people to join, or most of the time other people themselves join. Okay, and they will stop the issue which were going on, and the further the issue will be solved by police and judiciary. Okay. Yes, Hira. So I wanted to ask that if on a picture we make different things, not full stories, it is beneficial. मतलब Now on seeing a picture, we should make while practicing, we should make themes on it, not full stories, and it is helpful. पूरी स्टोरी बनाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है? Like if you will be only practicing themes and themes, see, a good story must have good theme, good actions, good background, good conclusion, everything. So if you will be only discussing about themes, so then how it's going to be a good story when you will be missing on good actions and good background and good conclusion? Yes, sir. I also wanted to ask that it is beneficial that if you mug up some points, for example, what are the steps that you can take while rescuing someone, while drowning, while rescuing a drowning person, or other steps that we should mug up and make a pile of these sentences. Yes, I'm not saying I won't use this word mug up, but it is definitely helpful if you learn about how to rescue someone, from quicksand, how to rescue someone from when they are drowning, how to rescue someone
how to save lives when there is a situation of fire, how to give CPR, how to some other steps are also there. You can refer to the miscellaneous section of Mavericks Telegram group. I've sent multiple practical knowledge or general knowledge things there in the miscellaneous section of Mavericks Telegram group. There we have covered about CPR and other situations also, like water drought and everything. So it is always better to be better informed and have more practical knowledge in life. But I won't say that you mug up sentences and write those particular sentences in a story. No, just have that knowledge, also have that ability to solve social problems, to solve different kind of problem. That will be definitely helping you. Okay. Okay. Whose doubt was it? Yes, sir. Okay. Yes, Ankit. Okay, okay. So you were talking about, one candidate was talking about the picture in which the fighting was going on and people were not doing anything, for stopping the fight. So if if the protagonist has worked there and is able to stop the fighting, so is it necessary for to go to the police and No. if he has solved the problem, so is it necessary to go? No, definitely no. Whatever I say is not patthar ki lakeer. It completely depends on context, and it is very subjective to what I perceive and imagine the situation to be. Yes, if the protagonist is able to solve the dispute by himself or the group of people which is around them, if they are able to solve that particular issue, then it's completely fine. The problem is solved by themselves only. Okay. Yes, Rahul. कई बार ना ऐसे पिक्चर्स होती हैं जिसमें एक ना मतलब कुछ क्लियरली नहीं होता, जैसे ना उसमें किसी कैरेक्टर की फीलिंग्स प्रॉपर्ली डिस्प्ले होती है, ना कुछ खास एलिमेंट होता है. मतलब लास्ट टाइम एक पिक्चर थी जिसमें बहुत सारा सा ब्राइट सा था बैकग्राउंड और एक पर्सन था जो ब्लैक कलर का शेड था, उसका कोई इमोशंस नहीं दिख रहा था, ना पिक्चर में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड थे, एज सच कुछ बैकग्राउंड में था जिससे हम मतलब एक आइडिया परसीव कर सके कि ये क्या चल के रहा है इसमें. तो सर ऐसे पिक्चर्स में एक स्टोरी कैसे बनानी चाहिए, मतलब उन पिक्चर्स का ना, मतलब भले ही उन कैरेक्टर्स का कुछ मूड नहीं होता है, पर उन पिक्चर्स का कुछ मूड होता है. लाइक द थीम, देयर मस्ट बी सम आइडिया बिहाइंड दैट पिक्चर, कि उस पिक्चर्स को देख के कुछ ना कुछ तो लग रहा होता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेशराइज्ड सिचुएशन, or this picture is like is like a romantic picture which is having a lot of vivid colorful ideas while drawing. I'm not saying about the characters, I'm saying about the whole picture. So you can relate those picture to those ideas. It can be also exploring philosophy. It can be also journaling down thoughts. It can be also other aspects also. Like you have to completely use your imagination for that. If you are into बुकलेट yes, Himanshu. Himanshu, you have to raise your hand to speak. Okay. Who asked this doubt? Rahul? yes sir I sir fast this out. Okay, so is that clear? yes sir now it is clear. सर मतलब आप यही बोल रहे हो कि कैरेक्टर पे फोकस ना करके पिक्चर पे फोकस कर. हाँ, अगर मतलब कैरेक्टर की थोड़ी लिटिल इंफॉर्मेशन है, हमें पूरी पिक्चर को देखना है. हाँ, तो हमें पूरी पिक्चर को देखना है और उस पिक्चर को देखकर कुछ ना कुछ हमें लगेगा, जो लग रहा है ना अंदर से, उसको लिखना है. और मैं कहूँगा उसे इस प्रकार से पॉजिटिवली लिखना है कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो. हम आगे बात करेंगे कि अच्छी स्टोरीज क्या होती है, अच्छे आइडियाज क्या होते हैं. yes sir. Okay, so now let us be back on our discussion of hero identification. तो हीरो की कुछ ऐसे ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, और हमें पिक्चर ऑब्जर्व करते वक्त हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियलिस्टिक रिसोर्स हो, उनका यूज करना है, उन्हें हमारी स्टोरी में इन्वॉल्व करना है. अगर हमने उन्हें स्टोरी में इन्वॉल्व किया तो दैट विल मीन टू द असेसर दैट we have based our story on what is given in the picture. We have not related some other story to the given picture when we have made a preconceived story.
No, that is not the case, because our story is coming out of the picture. So we have to include whatever there is in the picture. We have to make use of the available resources. Logical assumption of resources is also highly acceptable. This is self-explanatory. Protagonist should project him of high value. Okay. Now by high value, we mean a respectable person in society, and as well as he is also having self-respect and carrying worth of his time and prestige and moral value must be in the protagonist. Okay. It does not mean that protagonist will not be using broom and will not be cleaning roads. No, it is not, because it is not like that. High value means he is a respectable person. If he asks for help in society, then there will be people who will help him, because he has some respect in the society. He carries worth of his time. It means that he will not get involved in activities of minute and very less importance to him. So, for say, if he is walking, and he will not involve while walking in such activity which will make him a few bucks or a few money. So for that he is not going to do such things. Okay, and let us say he will invest his time properly in some productive game. Like we cannot make a project manager. He was working from office to home, and then he saw a video. He saw a uh, let us say then he saw a video. What is that? Cyber cafe. Then he saw a, I don't know what that term is, जहाँ पर हम गेमिंग कर सकते हैं कंप्यूटर्स में जाके. तो उन्होंने वो जाके दुकान देखी चलते चलते और वहां जाके गेम खेलने लगे. नो, ही हैव हिज वर्थ ऑफ हिज टाइम. अगर चलते चलते उन्हें किसी लाइब्रेरी दिखी तो वो लाइब्रेरी में जरूर जाएंगे, वहाँ किताबें देखेंगे, पर वो ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो टाइम की खुद की कदर करते हैं. ठीक. नेक्स्ट, प्रेस्टीज. उनकी कोई इज्जत है, प्रेस्टीज है, खुद में रुतबा है कि वो उस हिसाब से अच्छे मतलब अच्छे इंसान हैं सोसाइटी में. और उनकी मोरल वैल्यू, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, मोरल वैल्यू मीन्स कि वो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे की डीप मीनिंग देखते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बंदा, हमारा कैरेक्टर, अगर खाना भी बना रहा होगा ना घर में किसी के लिए या फिर बाहर किसी के लिए, तो ही विल नॉट जस्ट सी इट एज फूड, ही विल सी इट एज ए नरेटिव. वो उस खाने को इस तरीके से बनाएंगे कि खाना खाकर अगले को फील हो कि खाना कुछ है, उस खाने में प्यार और इमोशंस खुद के डालेंगे, उसको इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, आई वाज लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट, इन दैट देयर वाज अ कमांडिंग ऑफिसर, ही वाज विजिटिंग द लंगर. तो लंगर में जब कंपनी उनकी ना यूनिट की कंपनी आई थी 3 दिन बाद में ऑपरेशन की, तो जब 3 दिन बाद में ऑपरेशन के वो यूनिट में लौटे तो देखा ऑफिसर्स जब खाना खाते हैं, जवानों के बाद खाना खाते हैं, तो जब वो उन ऑफिसर्स में लंगर में घूम रहे थे और देख रहे थे खाने को, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि खाना ठीक है, मतलब सब कुछ है, पापड़ है, ये है, वो है, बट कुछ खास नहीं है, क्योंकि अब 3 दिन के बाद कंपनी लौटी है तो देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल. तो कंपनी जो सीईओ थे, उन्होंने जो लंगर के कमांडर है उनको नेक्स्ट दिन बुलाया और ऑफिस में पूछा कि भाई तू जो खाना बनाता है, ठीक है, ये इसकी तुझे फिक्स सैलरी मिलती है महीने के एंड में. फिर उन्होंने बोला यस साहब. तो बोला तू कैसा भी बनाए क्या फर्क पड़ता है, देयर इज नो डिफरेंस, कि तू कैसा भी खाना बनाए क्या फर्क पड़ता है. बोला नहीं साहब, मुझे अच्छा खाना बनाना. तो बोला अच्छा खाना क्यों बनाना है तुझे, तुझे क्या मतलब अच्छा खाना बनाए या ना बनाए, तुझे तो सैलरी मिल रही है ना. बोला सही नहीं साहब, जब मैं अच्छा खाना बनाता हूँ तो जवानों का मोराल हाई हो जाता है. बोला तू प्रधानमंत्री है. सीईओ बोला तू प्रधानमंत्री है, तुझे मोरल हाई करना है, तुझे सैलरी मिल रही है ना. तो बोला नहीं साहब, जब मैं अच्छा खाना बनाता हूँ उनका मोरल हाई होता है, वो खुश रहते हैं, यूनिट में अच्छे से दिल लगा के काम कर पाते हैं और टेररिस्ट को मारते हैं. तो टेररिस्ट मारने का काम कर रहा हूँ मैं सब, तो मैं अच्छा खाना बनाता हूँ तो ज्यादा टेररिस्ट मार पाते हैं. तो बोला सीईओ हाँ, ये हुई ना बात. ये इस तरीके से अगर हम, वो हर कोई अपने काम की वैल्यू समझेगा और मोरली और एक डीप वैल्यू और स्पिरिचुअल वैल्यू से अपने काम को लेकर इंपॉर्टेंस रखेगा और काम के प्रति डेडिकेशन रखेगा, तो एवरी वर्क इज गॉड्स वर्क.
अगर हम जैसे बोलते हैं कोई काम छोटा नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हर काम एक बड़े गोल, एक ग्रेटर गुड का पार्ट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो बीइंग मोरली राइट एंड morally valuistic person makes you think twice about society and about greater good. बेसिकली हम इसे मान सकते हैं ग्रेटर गुड के बारे में सोचना, moral values. Protagonist must be able to handle stress and remain confident. Entire SSB is based on stress, where you will be in situations where you will be under stress and pressure of performing better. Remember, taking stress is a voluntary choice made by us. We indulge in thinking about the negative possible outcomes in a situation, then only stress can win over our calm and cool. I repeat this sentence. Remember, taking stress is a voluntary choice made by us. We indulge in thinking about the negative possible outcomes in a situation, then only stress can win over our calm and cool. So just remember, you are giving a simple test where you can solve and imagine. Yes, it is very funny to read. Just remember, you are giving a simple test where you can solve and imagine, and you can do anything just by writing on a piece of paper. So chill, it's just you have to write the solution, just be in the now, just focus on the moment, don't bypass the problem, fight your own fight. Okay, so let me repeat what it is mentioned in the paragraph कि देखो, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में जब टीएटी में कोई पिक्चर दिखाई जा रही है, आप एक बदलाव ला रहे हो, आप उस स्टोरी को लिखने के बाद में आपने किसी सिचुएशन में क्या तो उस जो भी सिचुएशन थी दी हुई उसमें इम्प्रूवमेंट लाया या उसे बदलकर एक अच्छी सिचुएशन बना दी। क्रिएट, इम्प्रूव और इनोवेशन आपने किया है, या तो आपने कुछ नई चीज का क्रिएशन किया है या फिर इनोवेशन की। इनोवेशन मतलब कोई चीज हो रही थी उसको एक एफिशिएंट मैनर में एग्जीक्यूट किया है, दैट इज innovation. And you have improved something, that is also whatever situation there, if there is a bad situation you have made it a better situation, so you have improved the situation. So आपको ये सारी चीजें करनी है, सिर्फ आप एक एसी हॉल में बैठे रहे होगे और आपके हाथ में पेन होगा, पेपर होगा, सिर्फ आपको लिखना है और इमेजिन करके दुनिया बदलनी है, ठीक है। तो दिस कैन बी a very simple and easy task, but just you have to have a good psychology and good intent to do so. Now let's come on the theme of the story. Yes, bhai. Yes, thank you, Sachin. मैं ये बोल रहा था कि somewhere when we write stories in TAT, it is slightly different from the PP&DT, because in PP&DT generally heavy pictures are shown. So TATs are somewhere ambiguous stories, but it is little bit realistic as compared to the PP&DT story. So the one important point which I think that must be mentioned in the statement, that अगर हम एक कैरेक्टर को हीरो बना रहे हैं तो it is imperative to highlight his actions as well as show him as a superman, means हम उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं ताकि वो सबकी स्पॉटलाइट में आ जाए, so that we can get adequate credit from the assessor. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सुपरमैन दिखाते दिखाते जो दूसरा कैरेक्टर है उसको हम डाउनग्रेड कर दें. That is not acceptable at any cost, because somewhere candidates have a habit of showing other character down and then to highlight the hero of that story. So that can even give you discredit to your stories, and that can hamper your performance over there. And apart from that, एक दो पॉइंट और है मेरी तरफ से कि मैकेनिकल स्टोरीज से हमने बचना है. Story should be very well grounded, and if we are writing stories from the conditions and situations which we generally face in our surroundings, as Sachin has already mentioned, कि वो stories ज़्यादा welcomed हैं rather than making mechanical stories. अभी mechanical stories कैसी होती है कि जिसमें हम generally हम ये idea दे देते हैं कि यार he was to launch a scheme which was developed by the government of India. बट उसको क्या जरूरत है कि वो उस स्कीम को लॉन्च करे, मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है. बट व्हाट डू वी डू, हम जनरली गांव में गवर्नमेंट की स्कीम्स को लॉन्च नहीं करते हैं. तो ग्राउंडेड आइडियाज आर मोस्ट वेलकम. जैसे
हमने किसी ड्रेनेज को साफ करवाना है तो वी नीड नॉट टेक एनी परमिशन फ्रॉम एनी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, है ना। तो वो काम हम इजीली कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ एक पिक्चर का रेफरेंस लूंगा जिसमें एक पिक्चर पे एक बंदा घोड़े पे बैठा हुआ है। घोड़ा इज जस्ट लाइक अ म्यूल, है ना, जो म्यूल मतलब जिसको हम खच्चर बोलते हैं। सो ही इज sitting upon खच्चर, and there are two ladies who are stopping that guy while coming to back to his home, or it is a scene of village. So whatever themes is hitting to your mind, that is acceptable, but in my view the theme of the picture कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है। वो लेडीज इस कंडीशन में है कि दे आर आस्किंग फॉर द हेल्प टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज सिटिंग ओवर द म्यूल। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको हाई फाई स्टोरी अगर बनाते हैं कि वो एक हॉर्स राइडर था। अभी म्यूल और हॉर्स में देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस इज डिपिक्टेड फ्रॉम द पिक्चर। तो वो चीजें छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो वी वुड नॉट शो दैट म्यूल एज अ हॉर्स, और हम उसको मेयर शो नहीं करेंगे। तो अगर वो खच्चर है तो लेट इट बी खच्चर, लेकिन खच्चर के ऊपर ही स्टोरी बनानी। ऐसा नहीं है कि हमने वो माइनर डिटेल को इग्नोर करके और उसको हमने मतलब वी शुड नॉट एस्केप फ्रॉम द पिक्चर, whatever मतलब as realistic as possible we should make stories। तो उससे क्या है हमारा जो एक रियलिस्टिक अप्रोच होगा that will be very much welcomed by the assessors। तो lastly उसका जो थीम रहेगा कि he is about to help those ladies who are seeking help from that person। अभी वो हेल्प कैसे करेगा, we'll have to make that person not a student, not a employer, not a professor, but we'll have to make him as a normal life living person, that he is a common man। बट उसकी जो वैल्यूज है, जैसे सचिन ने बहुत अच्छा मेंशन किया कि हाई वैल्यूज रिस्पेक्टेबल पर्सन होना चाहिए, ही शुड बी सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, एंड वो अपनी वैल्यूज अपने टाइम को कितनी वैल्यू देता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर देयर। तो ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम हिज बिजनेस, दैट ही इज अ म्यूल मर्चेंट, म्यूल मर्चेंट है, और ही इज कमिंग बैक फ्रॉम हिज office from his shop, and while coming back to his home he found that there were two ladies who were facing problem of that they had lost their only fellow who was the earning source, who was the only earning source to that family। तो जब ऐसी कंडीशंस में अगर उसको हेल्प करते हैं तो that can be a great role of that individual while helping them, fetching their fellows down to them, and such kind of actions can be related to the picture ना। तो इसमें हम हाई फाई स्टोरी जो है ना नहीं बना सकते। ओके सचिन, यू कैन टेक ओवर प्लीज। Yes, very well covered, bhai. Now let's take doubts also. Yes, Mahendra. Sir, I was saying that like it is the mean of high value means is that we always pursue profession like civil engineers, because Yeah. when I am writing stories of TAT, like most of the stories are based on student. Like in the 7 and 6 stories, I will make my character student. So it is necessary to make all the characters different, and that should be on a high post. Got your question. High value does not mean high post. High value means that you are thinking about greater good. Greater good means आप भला चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा भला चाहते हो, और आप बहुत ज़्यादा लोगों का भला चाहते हो। ठीक है, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के आपने कोई वेबसाइट बनाई जिसमें सारी दुनिया जहान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के PYQs हैं, और उन सब PYQs के सोल्यूशन है। आपने कुछ AI एल्गोरिथम ऐसे लगाया कि टॉपिक वाइज सिलेक्शन भी हो सकते हैं, टॉपिक वाइज फिल्टर भी हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे वैसे करके तो आप एक स्टूडेंट होते हुए भी एक अच्छा काम कर सकते हो, राइट। जरूरी नहीं है आप इतने बड़े लेवल पे करो, ये भी जरूरी नहीं है। आपको बस हाई वैल्यू मीन्स यू हैव टू बी अ पर्सन हु थिंक्स deeply and who have compassion and love for fellow human beings. That is simple, that is high value। हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना IAS IPS बनाना है, प्रिंसिपल बनाना है हर स्टोरी में आपको। यस भाई अश्विन। यस सचिन, एडिंग टू योर पॉइंट ओनली, इसमें ये कहना चाह रहा था कि देखो जब हम SSB में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर very much aware about that we are not a criminal and we have no any such history which can put our personality in a bad shape, है ना। तो पहली बात यह है कि हम क्रिमिनल नहीं है। दूसरी बात, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, हमने किसी का फालतू में दिल दुखाया नहीं है, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है,
जो भी बैड हैबिट्स एक्टिविटीज बैड हैबिट्स सोसाइटी में होती है हम उनसे सभी से परे हैं. तो that means you are a high valued person if you are still able to save yourself from such kind of activities in the society which is very prevalent and at the high peak as of now. So you are, that means you are very much distinctive person amongst the there are so many youngsters in the society na? So from that point of view you could just render yourself in a mood and in a state that you are totally a high valued person and there is no need of certificate from anybody. तो वो चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि अब मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मैं एक हाई वैल्यूड पर्सन हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया. तो आपको वो ऑलरेडी वो चीज आपकी डिपिक्ट हो जाएगी व्हेन यू आर गिविंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू द सेंसर्स. थैंक यू. Sachin, go ahead please. Yes. So let's now move on fastly with our discussion. We have 15 pages of notes. Let's talk about the theme of the story. It should be positive. A story is considered as negative when there is forced negativity. What is forced negativity? When there is no negativity traces in the given picture, but still you are introducing some problem or some difficulty for yourself in the story, then it is mentioned as a forced negativity, which is created by your imagination. So that is something negative. A positive story or theme is one which goes along with the picture. That's why observing the picture correctly is so critical. So as we have discussed that we have to not introduce forced negativity. Also, it is the case that we do not have to neglect whatever is there in the given stimulus. If there is negativity in the given stimulus, we have to address it. And we have to address it, and we have to improve it. We have to make turn the situation around. We have to turn the table. There we have to bring we have to make very positive constructive actions so that we will be converting the given negative situations in a more desirable one, right? So do not confuse your positivism or optimism, that you will not perceive or you will not accept the negativity which is present in the stimulus. Okay, most of the time what candidates do, even if they are watching some some picture, so first they will think that I'll, for to solve anything or to like bring good actions, I'll have to make first good problems. So you do not have to generate problems by yourself. You can basically observe whatever inconvenience is there, you can improve upon that, and you can bring some good actions into your story, so that will be making people more conveniently living their lives around that problem which you perceived. So next point is being practical. Practicality is like thinking logically in how you will behave in real life. You don't have to be that what should I say, you have to be you have to be yourself. You don't have to think that even if you are going for an exam and if you see some problem which is there and you will invest 3 to 4 hours there, no, you cannot afford that, because when you will miss out on your exam, your 1 year will be wasted. So you will try to find out some other way. You will take help of other people, and you will take a more practical decision by going for exam and helping that person too. Okay, so this is about being practical. Practicality, let me read what is written here. What you are going to write in the story, can this happen in real life? If the answer is yes, then please go ahead. It is a practical story. Now let us talk about what is a logical story. Logical story is one where saying anything is that things related to the picture logically. Means if you are like, if there is a car in the picture and if you are writing a story that the person is cycling, so it is not quite logical. Okay, yes, if there is a car, if there is a cycle which is mounted at the rear of the car, then it is logical one. Okay, so now let's move on the next term, which is achievable. Always try to aim for a short term goal so that you can cover the actions for the work. When story have a long term goal, then it resembles over ambitiousness, not achievable, and also wishful, as you won't be able to cover all the actions or steps taken by the protagonist of a story. 12वीं से IAS बनने का सफर बनना
12वीं से आईएएस बनने तक का सफर नहीं लिखना होता, वो विशफुल आइडिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज commensurate टू द एज एंड वर्क ऑफ द हीरो। अगर आपका जो हीरो है उसकी एज 23 है और लाइक लेट से 18 है, तो 18 है तो ही विल बी लिमिटेड। अगर मान लो लेट से 17 है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर अदर थिंग ऑल्सो। अगर वो 18 का है तो वो कुछ कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल नहीं कर पाएगा विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स। So we have to be logical and we have to think about the age and the work of the hero also. Like if he is an engineer, he will not be able to give uh, medical treatment to people. Okay. So next point is about the level of difficulty. The level of difficulty in the story, then it will be project OLQs. अगर आपकी स्टोरी में आप काम अच्छे कर रहे हो, डिफिकल्ट काम कर रहे हो, तो आप अच्छे एक्शंस लिख पाएंगे। अगर आप अच्छे एक्शंस लिख पाएंगे तो आप अच्छी क्वालिटीज प्रोजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप वर्किंग ऑन आइडियाज ऑफ स्टोरी। मोर यू वर्क द मोर यू विल बी एबल टू राइट फाइन स्टोरी। अगर आप एक्शंस के बारे में पढ़ते रहोगे, सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी, प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर करते रहोगे, तो आपके एक्शंस की क्वालिटी और फाइन होती जाएगी। Imagine something unique. Okay, and now do not do not get swayed away by these 3 words that imagine something unique. You have to solve common problems and you have to make stories on common themes, but you have to do it in a manner, you have to write certain actions which are really good and which are of very good quality. Next trick is inspired from an LWC Psych assessor. I don't know, I'm not sure about his name, but it is his mantra that theme plus profession equals to goal. अगर आपकी थीम के साथ आपका प्रोफेशन अलाइन कर रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे एक्शंस ले पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आपके स्टोरी की रिक्वायरमेंट है कि आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पर एक्शंस लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोफेशन और थीम अलाइन करना चाहिए, फिर आपका गोल अच्छे तरीके से बड़ा गोल अचीव हो पा रहा होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहो, रियल हीरोज हैं सोसाइटी के, उनसे सीखो। रतन टाटा। सेल्फलेसनेस शो करो, ग्रेटिट्यूड रखो, इनिशिएटिव ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल चीज़ें करो पर अच्छे इंटेंट के साथ करो। ओके, एनी अभी हम डाउट्स लेते हैं। अगर आपके कोई डाउट है रिगार्डिंग थीम ऑफ द स्टोरी, थीम से रिलेटेड कोई भी आइडिया है तो सॉरी क्वेश्चन है, या फिर कोई भी बात आपको बतानी है तो आप बता सकते हो। ये सागर। Sir, if the story is too much neutral or the picture, and if you will don't take any problem or negativity, then how the leader will emerge and solve the problem? नो, डेफिनेटली नेगेटिविटी होगी तभी तो प्रॉब्लम होगी तो तभी तो सॉल्यूशन होगा। बट व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर पिक्चर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो खुद से इंट्रोड्यूस मत करो यार। ठीक है, जैसे अगर हमारी जूते की कंपनी है और पिक्चर में दिखाया गया है कोई ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसमें आप ले सकते हो कि हाँ जूते की कंपनी की या फिर जो भी कंपनी है उसकी ग्रोथ डाउनवर्ड जा रही है। पर अगर उसमें पिक्चर में दिखाया नहीं हुआ कोई भी ऐसे स्ट्रेस वाले साइंस, तो जरूरी नहीं है आप वहां पर बताओ कि वहां नुकसान ही हो रहा है। आप भी बता सकते हो कि बिजनेस अच्छा चल रहा था, उन्हें फर्दर ग्रो करना था, तो उन्होंने एक्सपेंड किया इस वाले सेक्टर में भी। उन्होंने नए टाइप के स्नीकर्स निकाल दिए, वो पहले सिर्फ कैजुअल या फॉर्मल वियर्स में थे, वो कैजुअल और स्पोर्ट्स वियर में भी आ गए। सो इट इज लाइक दैट। ओके, अच्छा सर, मतलब अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जाना होता है। हाँ, यस, वेरी राइट। नेगेटिव से न्यूट्रल, न्यूट्रल से पॉजिटिव। यस, थैंक यू सर। वेलकम। यस अश्वनी भाई। यस, वेरी वेल सेड सचिन। एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी जो है ना जबरदस्ती स्टोरी में नहीं डालनी है, अनलेस कि देयर इज अ क्लियर कट नेगेटिव इंप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पिक्चर शोन टू अस। इसमें बेसिकली क्या हैबिट होती है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाट दे डू,
whenever there is any discussion is taking place, suppose there is a table and few people are sitting around the table and they are mixture of ladies and gentlemen, and somebody one or two characters of amongst them, they are just having their hands with their head and they are just looking like they are in pressure and they are in tension like that, है ना? तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसकी कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो डाउन कर देते हैं, जैसे सचिन ने बताया। तो अगर हम उस कंपनी की ग्रोथ हाई करते हैं, सो दैट इज आल्सो अ गुड आइडिया, देयर इज नो एनी नेगेटिव अबाउट दैट, बट उससे भी एक गुड आइडिया ये हो सकता है कि अगर हम उसको ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लिखना चाहें ना, कि मान लो वो बंदों ने उसने जो उसका मैनेजर है उसने एक मीटिंग बुलाई, सडन मीटिंग बुलाई, उसका रीजन क्या था कि दे हैड टेकन अ good order for a high amount of that particular production for which that company is based. Suppose company is of clothes and they have got a huge order on the occasion of Deepavali. तो वो दीपावली के जो ह्यूज ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको मीटिंग बुलानी पड़ी, एंड इन सच अ टाइम दैट वी कैन जस्ट इमेजिन दैट कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वुड बी देयर इन द company, and that manager has to handle this situation in a immaculate manner, that so that that action can be executed in a positive manner and that production can be taken out on well in time so that the order can be completed. तो उस जगह पे हम ये वाला एक्शन अगर हम मेंशन कर सकते हैं तो नेगेटिविटी वहां पर छुप जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती इसमें नेगेटिविटी जो है डालनी है स्टोरी में। तो स्टोरी शुड बी वेरी क्रिएटिव, और वो तब क्रिएटिव हो जाती है जब हम ऐसे एक्शंस डालते हैं, ताकि अभी मान लो एक लड़की खड़ी है अपने घर के दरवाजे के सामने और पीछे से उसकी मदर वो उसको चिल्ला रही है, जहाँ मान लो घर के सामने से उसका भाई बाहर से आ रहा है, तो हम घर का सीन है तो वी कैन मेक अ स्टोरी वेरी रियलिस्टिक हियर। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द किचन इक्विपमेंट्स, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द हाउस होल्ड आइटम, तो वो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं हम। मतलब दिस इज वेरी इजी आइडिया। जैसे अभी मेरे मन में भी आया कि ठीक है यार, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा कि सिलेंडर से ना गैस की स्मेल आ रही थी किचन में, सो दैट्स व्हाई हर सिस्टर कॉल्ड हिज सिस्टर कॉल्ड हर कि यार आप आ जाओ और हमारी हेल्प कर दो, दैट सिलेंडर इज लीकिंग गैस। So such kind of problem, such kind of picture, we should not depict the negative thoughts over there. तो हम वहाँ पर ये कर सकते हैं कि वहाँ पर सिलेंडर को शिफ्ट करना है, जहाँ कुछ ऐसा आइडिया प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम घर पे और भी बहुत सारे काम करते हैं। मान लो मदर के, सपोज करो मदर के कई बार कहीं एक स्लाइट इंजरी हो जाती है, शी इज अनएबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ द होम and we'll have to go to that put the clothes on the hanging wire so that they can be dried, है ना? So in such kind of helping, and वो आपकी डायरेक्ट PIQ से मैच भी करेगी स्टोरी। So ऐसे ऐसे करके जो small actions हैं that can help you out in your TAT writing, sir. Okay, Sachin, please take over. Thank you. Yes, very rightly covered. That even when we are perceiving some negative pictures, we do not have to take blunders happening, and even we do not have to perceive that there is some a major problem with some character or with the qualities or with the personality of some fellow. Like एक भाई ने एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई जैसे हमारा मदर फिगर है, मदरली फिगर कैरेक्टर है, वो किसी को चिल्ला के बुला रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट कि वो भाई लड़ाई करके ही घर से बाहर गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे कोई माइनर प्रॉब्लम है, इमेजिनेड है, अनएक्सपेक्टेड है, तो इसलिए वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर हमारा दिखाता है कि हम ऐसे वाली सिचुएशन होता है जब घर में सिलेंडर लीक की प्रॉब्लम हो, या फिर सिलेंडर एकदम से खत्म हो गया, सब्जी चढ़ रही है, दूध चाय बन रही है, ऐसी वाली प्रॉब्लम। तो इन वाली प्रॉब्लम्स का हमने मैग्नीट्यूड और नेचर चेंज कर दिया, जहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज से रिलेटेड बना दी, अलग अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बना दी जो किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर वहीं पे आपने स्टोरी बनाई होती कि देयर इज सम प्रॉब्लम देयर, वहाँ झगड़ा हो रहा है ऐसा कुछ, तो वहाँ वो दिखाता आपकी प्रॉब्लम, वो आपकी साइकोलॉजी को एक्सपोज करता कि you get indulged or someone from your family get indulged in this kind of activities, which turns out to be in some extent. Yes, Mahendra, you want to ask something? Sir, I was saying that sometime we get a picture like that
In my previous SSB, I got a picture in which a person is climbing on mountain. So I made him a mountaineer. So, but sir, at that time I was not having detailed action about the mountaineer, that how a mountaineer practice. So sir, when we get a picture in which like the theme, like something going in a like something going in a different way, we don't have detailed action about that. So how the person is working, like a civil engineer, how a civil engineer works for making road, and you don't have Ah. elaborated action about that. So in that case, what should we do? So actually, it's very interesting question and very good question. It has happened with me also. Like I, even if there is a story about tracking, I do not know a thing about tracking. So in that scenario, when we are in that particular situation, what we have to do? First of all, I repeat a sentence that prevention is better than cure. So expand your your reasoning ability and your thinking and your knowledge base, so that you cover all these basic things, which are what is snorkeling, what are adventure sports, how is mountaineering done, what is ropes, what is safety equipment, which kind of shoes is to be wear in mountaineering, which kind of shoes is used in trekking, and what is the basic equipment which you have to bring in, like while doing trekking or while doing camping. So you can read about that. Now, if you are in a certain situation where you don't know a thing about what particular actions which you can take, so you can go for another way. Instead of explaining more about the technicalities, you can go a little spiritual and philosophical about the story writing format. What I used to do, I'm not saying that this is the optimal solution. I'm just saying that I used to do it like that. कि अगर कोई mountaineering हो रही है, तो I will not go into details that which kind of preparation they are making. I'll just say that he followed the instructions of the team. He followed the group, and he followed the instructions of the instructor. He took care of all safety SOPs, and I'll make my story based on that. He was during mountaineering, he was carrying GoPro, he was motivating everyone, he was making sure that everyone was safe, and he was making sure about to carry extra load, and also to take care of the fellow group members. He was also taking pictures at good summits points, and at summit points, or at like mm, I used to base my story something about that. He was writing, he was documenting something like this. This is my answer. Yes, Ashwani bhai, you were speaking something. Yes, अगर if somewhere there is a picture related to trekking or mountaineering, उसमें basically जो हम small actions जो about which everybody is supposed to be aware, and mostly people are aware, whosoever is aspirant of becoming an officer in the armed forces, generally what is the driving force of becoming a mountaineer, है ना? इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है सबसे पहले हमारा एंडोरेंस एज वेल एज फिजिकल मेंटल स्टेमिना। तो ये तीनों चीजें हैं, जो एंडोरेंस, फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना, ये तीनों चीजें हमारी आती है जब व्हेन वी पुट आवर बॉडी इनटू अ शेप where our body can survive an odd situation when there is no and there is a less infrastructure available with us and with the existed less resources, है ना? अगर हम लेस रिसोर्सेस, जैसे बोलते हैं ना कि देयर इज अ कोट दैट व्हेन यू आर ऑन अ जर्नी विद लेस लगेज यू आर वेरी मच फ्रीयर देन यू आर एट होम, है ना? तो अगर हम कम सामान के साथ जर्नी करते हैं तो वो हमें घर से भी ज्यादा अच्छी लगती है, दैट इज रियली अ फैक्ट, है ना? तो when we are able to live on this planet with less resources as well as existed infrastructure, and unless we just make complaints to others, तो तब हम वहाँ पर survive करना सीख जाते हैं। In that manner we have to think that very creatively, that what could we do at that time when there is a lesser scope of having so many facilities at a time। तो उसमें ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और उसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? सबसे पहले हम रनिंग करते हैं, अपनी बॉडी को फिट करते हैं, अपना सांस पकाते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना? फिर उसके बाद हम उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस हैं जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास किट एंड पॉकेट किट्स होनी चाहिए, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमारे पास अच्छा किट बैग, है ना, सैक बैग बोलते हैं। So these all actions can be added to the story, and this is, I think, very much heavy amount of material that we have discussed right now. Just now, सचिन ने भी बताया और मैंने भी कुछ बताने की कोशिश की। So I think from these all
just materialistic things. If you mention these all things in your actions, then definitely your story will be welcomed by your success, right? So इसमें ऐसा भी हो सकता है, कई बार कई लोग दिखा देते हैं कि यार वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम शोइंग दैट माउंटेनरिंग, तो उसको लैंडस्लाइडिंग में दिखा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है unless it is totally shown that there is a scene of landsliding, right? So thank you. Sachin, go ahead please. Yes, again, if you show that there is a landslide, then it will be a case of false negativity. So now moving ahead, we have more pages remaining. Approach. The approach towards a problem should be positive, practical and logical, achievable. Explain the methods followed. The process must be systematic. You have to write your actions in a chronological method कि A होगा फिर B होगा फिर C होगा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो सबसे पहले हम जाएंगे और जो पर्सन है गिरा हुआ है उस सिचुएशन से उनको बाहर निकालेंगे, रोड के साइड में लाएंगे, फिर जाके हम फर्स्ट एड करते हैं, रोड के बीच में हम सब कुछ नहीं करेंगे। तो हमको इन सारे एक्शंस को सिस्टमेटिकली ABCD क्रोनोलॉजिकल मेथड में लिखना आता है। So next is follow rules and regulations. Whatever the rules and regulations are there, you have to follow them because they are made with utmost reason and they are there for some greater goodness, and there should be some discipline, and which is very much the basis of armed forces. Unique. The approach must be unique. There is a every time more efficient and more achievable way to go. Whenever we are solving any problem, so there are two ways: conformism and non-conformism. Conformism refers to being conventional, whatever method which has existed in the history, we will use the same method and will solve the problem. So that will be a boring story. If you will go and take 2-3 inspiration from all the places, you will make and come out with a different solution which is more efficient, that will be better, and it will be a unique story, and that will be a unique approach. Approach is what you are being assessed on. So how you approach problems and how you are going to solve the problems. It is not the problems, it is not the solution. It is most important is the approach. It's most important what psyche you are having behind that approach and why you are doing what you are doing. So it is also very, very important. Next, let us come on conclusion. So, Bhai, do you have anything to add? Ashwani Bhai, I have my banana shake in front of me. Right. Yes, Sachin, I would like to add few points and not take that much time. Points, I would sure that points are not repeated. Basically, TAT is a test of imagination as already elaborated. और इसमें हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जो TAT stories है, that should somewhere should be depicted from the things as well as attributes which we have mentioned in our SDT, and we are telling the IU that what are our achievements. अगर stories, pictures, achievements के peripheral आती हैं तो मान लो अगर young boy sitting on a cut tree in a hilly area seems like a soldier, so definitely a soldier is going for running at early in the morning, है ना? तो हम डेफिनेटली हम कुछ लोग एनसीसी से होते हैं, कुछ लोग हम स्कूल लाइफ में ऐसे कुछ हमने इवेंट्स अटेंड किए होते हैं जहाँ पर हमें सुबह में भागने का मौका मिलता है, लाइक तो ऐसे ऐसी स्टोरीज हम रिलेट कर सकते हैं. स्टोरी शुड नॉट बी डेफिनेटली अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ योर्स. If it is totally related to your life, that will be giving you much more credits than a normal story. और story में हमें फन्ने खाने बनाना है हीरो को. Hero should be very grounded, respectful as well as valued person. उसके बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि हम गलती कर देते हैं जब हम उसमें unnecessary information ज्यादा डालते हैं, and we want to show the psychologist that we are very knowledgeable person, है ना, we know everything. That is also quite dangerous for our performance, and that can even hindrance that we are going to get good marks inside, है ना, तो वो एक बहुत बड़ा hindrance बन जाता है. तो try to limit your words because TAT एक ऐसा टेस्ट है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है. Unless whatever you do in other tasks, that doesn't matter. If you are cleared with the TAT, then your other tests are very much considered, rather irrespective of performance in other
subjective test of the SSTs, right? तो टैट में अननेसेसरी वर्ड्स जो है ना वो प्लीज हमें अवॉइड करने हैं, ठीक है? अगर हम अननेसेसरी वर्ड्स लिखेंगे, जैसे सचिन भाई ने बोला था कि कोई भी नेगेटिव वर्ड आपने उसमें इम्पॉसिबल वर्ड लिख दिया, कि दैट मीन्स जो आपने सेकंड कैरेक्टर दिखाया है, अगर उसको आप बोल रहे हो कि ही वाज फीलिंग दैट टास्क इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, दैट मीन्स दैट अदर कैरेक्टर इज आल्सो योरसेल्फ। तो हमने दूसरे कैरेक्टर को डाउनग्रेड करके नहीं दिखाना है। तो डाउनग्रेड हम तब करेंगे जब हम उसके साथ एसोसिएट करके कुछ नेगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमने साइक को नहीं देनी है, अपने साइकोलॉजिस्ट को नहीं देनी है कि उसके मन में ये आता कि यार ये वर्ड इसने लिखा ही लिखा क्यों, है ना? दैट इज वेरी इम्पेरेटिव। उसके बाद an apparently small and simple aim is far better than any hi-fi but unrealistic aim। ये मतलब मैंने उसमें एक नोट लिखा था, उसमें इट इज वेरी वेल रिटन कि एन अपेरेंटली स्मॉल एंड सिंपल एम इज फार बेटर देन एनी हाई-फाई बट अनरियलिस्टिक एम। हमारा जो एम ऑफ थीम है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, भले हमें उसमें एक छोटा सा ही काम क्यों ना करना हो। छोटा सा काम जैसे हमें एक मतलब तूफान का मौसम है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल मेरे साथ हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि there is a old aged lady live in the vicinity of our quarter. So she was having kind of pain in her stomach and she was unable to even survive for an hour at her home, and she was facing a lot of uh, uncomfortability at home. So she was required to be rushed to the hospital immediately. तो उस कंडीशन में हमारी ड्यूटी बन जाती है। सो वी शुड नॉट शो कि वो हमने बहुत ज्यादा परोपकार कर दिया। परोपकार हमने नहीं दिखाना है, हमने उसको एज अ एक्शन दिखाना है, लेकिन एक्शन इमैक्युलेटिवली दिखाना है और इट शुड बी वेरी फैक्चुअल, एंड जो हम रियलिस्टिक काम करते हैं वही दिखाना है कि उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी में उस लेडी को उसके पेरेंट्स के साथ बिठाया और ही रश्ड हर टू द हॉस्पिटल, देन टुक केयर ऑफ हरसेल्फ ओवर देयर, ऐसे करके मतलब नॉर्मल जो एक्शंस हम करते हैं। लेकिन एक्शंस ऐसे सीक्वेंशियल होने चाहिए ताकि अनरियलिस्टिक ना लगे। और प्रेसिंग नीड जो है ना स्टोरी में, वो हमारी एक पिलर है, दैट इज अ काइंड ऑफ पिलर इन द स्टोरी राइटिंग। जब हमारे पास प्रेसिंग नीड नहीं है ना, सो स्टोरी इज नन ऑफ द वैल्यू, है ना? वट एवर एक्शंस वी आर जस्ट पुटिंग इन द स्टोरी, फीलिंग्स एंड थॉट्स, प्रेसिंग नीड, फीलिंग्स एंड थॉट्स, कि वो अगर वहां पर गया XYZ वहां पर गया तो क्यों गया, भाई उसे क्या काम था वहां पर जाने का, है ना? What was the requirement? And requirement should be very necessary and it should be objective, ज़्यादा long नहीं होनी चाहिए। And I think this much is enough from my side. So Sachin, thank you so much giving your valuable time, and thank you to all. You can continue, please. Yes, thank you. It looks like you're leaving now. No, I'll be having just 2 or 3 minutes. Okay. Okay, thank you, bhai. Thank you for your valuable additions. Yes, I had some points to add about. भूल गया मैं. Okay, no issue. Yeah. Why? So you were like Ashwani Bhai have added good point that you have to have good feelings and emotions and pressing need. Please heed two words: pressing need. You have to have a good need and a good introduction of the story, which will base your logic, the logic extent of the actions which you are taking right now. अगर कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बहुत लोगों को ज़रूरत है। अगर आप उसके लिए 20 घंटा दिन में काम करोगे तो वो लॉजिकल लगेगा कि दिस पर्सन हैज़ ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का एक्सटेंट बहुत बड़ा है and this is causing problem, that's why it's needed to be solved. Then if you will take good action for it, it will be justified. Otherwise, if there is a very minute problem and you will be investing so much time and energy on that particular problem, then it will be madness. No logical person or realistic person will do that. So your why, your introduction of the story, your introduction of the problem statement will tell the logical and reasonability of your actions, will justify your actions. So you need to be very careful about introducing that problem, and it is always important to select wise words in psychology. Your selection of words in WAT and TAT matters a lot.
Now let us take some questions from the chat section. I'm sorry that I was not able to heed to this question which was asked almost an hour before. So Rahul Chaudhary asked on 8:44 p.m. Sir, can you suggest some books regarding psych to improve our psych and get our concepts clear about psych? So I basically feel is psychology is pure and is improved when we read when we read about about spirituality, and because spirituality is something which explores every doing, every work uh, with such a deep understanding that it stands out, to make our intentions very pure and to make our thinking goes beyond the circumstances. We are not bound to circumstances. We think bigger and we think greater. We think for the why. We think uh, हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हम ये सोचेंगे इसे करने से होगा क्या, अगर ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया तो उससे भला क्या होगा, हम ये सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि उससे मुझे क्या होगा, मेरा भला क्या होगा इसमें. So I feel spirituality is not just about this only, but it is a whole pool of pure intentional thinking. So for that you can read some books which like I have read. First book is my favorite one, and let me show you the name of the book. So entire screen, yes. So you can see the name. This is a book by Eckhart Tolle, The Power of Now, which is based on like spirituality and which says you to think and remain present and takes your present moment and feel the being of yourself, okay, in the present moment. So this is one book, The Power of Now. The other book which you can read to improve your thinking and would you will know more about habits and will improve your productivity. The other book can be Atomic Habits, and yes, of course, Bhagavad Gita. If you have contextual knowledge of Mahabharata. Okay, so these three books are good enough. I feel if you read these, then you will be having a bar knowledge. If anyone else having any suggestions for book reading, then you may add, and please add those books only which will make psychology which will uplift the psychology of candidates. Okay, thank you, bhai. Thank you, Ashwini, for your time and energy. Okay, no one having any other book suggestions. So yeah, let me repeat: The Power of Now, Atomic Habits, Bhagavad Gita. Okay, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Yeah, I have not read. I have ordered this book on my recent birthday, but मैंने पढ़ी नहीं है ये. So now okay. So can you tell about this book? How will it will help? Okay, sir. So basically, it gives around 35 or 40 tips on how to actually use the road actually. Yes, very rightly put. So you can consider this book also. So the next question which was asked by Monica on 8:57 p.m. Sometime if someone seems like in negative mood, not the hero, so उसको तो negative mood में मान सकते हैं क्या? Actually PPDT में होता है ये, पर हमें नेगेटिव मतलब अगर हम दूसरे कैरेक्टर को भी मान रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम हमारी इमेजिनेशन से ही कर रहे हैं. So if the character is looking like negative, as you have mentioned, it seems like if it is someone is weeping, then you can mention them as in negative mood. Yes, definitely. But you have to perceive some other character which is in a better position to handle that situation, to console that person who is weeping. Okay, so let's now move on to our discussion further, and I guess टाइम लगने वाला है थोड़ा, तो
नो प्रॉब्लम, अगर किसी ने डिनर वगैरह नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। Conclusion. So conclusion should be optimistic, it should be practical and logical. Practical and logical in what sense? That जितना एक्शन करे हैं आपने, जितना कर्म किया है वो उसी के हिसाब से फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कर्म थोड़ा सा किया और कंक्लूजन में आपने लिख दिया कि पूरी दुनिया ही बदल गई। ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न फॉर योरसेल्फ। Avoid tangible awards and rewards much in TAT. Do not aim for returns. Go for these at the end. Self-satisfaction. इनके self-satisfaction आपका goal होना चाहिए. Good results of his action. जो आपने काम किया वो काम पूरा हो गया, बस यही आपका goal होना चाहिए. Happiness, आप happy हो सकते हो conclusion में कि he was very happy seeing that there were good results and his actions got success and this particular action helped the people, whatever thing is there in the picture. So the conclusion should be sticky to the task given. Save the person, like there's an example, save the person from drowning, check and found him breathing, taken him to the hospital, informed his family members, and he got well. At the end you can only add a few actions based on the opportunity if time and space allows you. You can add, he brought the matter to the concerned authorities by mailing them. ठीक है, वो डिप्लोमेट नहीं बनेगा, जाकर खुद से सब कुछ नहीं करेगा. If you are going beyond which is not very common in real life, then the candidate is going wishful, not sticking in the picture. Focus more on present scenario. Do not worry much about what is going to happen in 5, 6, 10 years. ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में रहकर एक्शंस लो और वो एक्शंस अलाइन होने चाहिए कि 5, 6, 10 साल में भी मतलब सही रहे, ऑन द लाइन रहे, जुगाड़ ना रहे. ये तो आपको ध्यान रखना है, पर ये नहीं कि आप 5, 10 साल के लिए काम कर रहे हो. Ask what you really are writing. Ask what you are writing in the story. Can that happen in real life, normally or frequently? Such ideas are highly acceptable. They are very logical and based on reality. So how to write stories? First point is follow the instructions carefully, even if you know them. Why I'm feeling that I'm boring you guys? Let me stop sharing this PDF. Let me go just by the flow. तो अभी हम बात करते हैं, मैं जनरली सिर्फ जो मेरे दिमाग में आएगा स्पॉन्टेनियसली वहाँ से बात करेंगे कि हाउ टू राइट गुड स्टोरीज. तो पहला पूरा स्टेप क्या होता है कि 30 सेकेंड्स में आपको पिक्चर ऑब्जर्व करनी है एंड देन नेक्स्ट 4 मिनट्स में आपको स्टोरी राइट करनी है. तो 30 सेकेंड्स में आपको ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने पहले बात की ऑब्जर्व कैसे करना है, हीरो आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, थीम कौन सी बनानी चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए. अब हम इन सारी बातों को कंपाइल करेंगे और फिर समझ रहे होंगे कि एक अच्छी स्टोरी क्या होगी. ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व करी पिक्चर को अच्छे से. अगर पिक्चर में कोई नेगेटिविटी दिखाई गई है तो स्टोरी फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी डैम सिंपल. You have to just solve that particular problem using the resources and also by adding more deep actions into it. If there is no negativity shown in the picture, then it is a tricky game. One more advice, one more point I got from my thrice recommended friend that tell the candidates who will be in the meet that please write stories, one or two, at least 1 to 3 stories which is related to your PIQs. If you write stories which is related to your PIQ, that will show that you are passionate and you relate to your real life and you are very much proud about that also. Okay, only do that if you are relating that current picture with the certain kind of activity which you happen to do in the past, which is there in the PIQ2. Okay, so where we were discussing about the observation picture. You have observed it well, you have identified the hero. Now it's about the problem.
So why is always more important, and why is the most important? Because it justifies your actions of the story which you will be writing. So there are different kind of uh, themes which can be stories can be based on, like social themes. There can be personal goals like running a marathon, or some personal goals like losing weight. Professional goals, working for the company which you are in the current organization. And so these kind of ideas, and there can be other also. So whenever you're thinking about the society, whenever you're thinking about the humans, fellow humans, and whenever you are trying to give convenience to the people and solve their problem, it is a high level idea because you are having compassion for the fellow human beings, and it is considered that you are more likely to be more socially adaptable, and you are a teamwork person. You are not a selfish person, and your intentions are at the very right place. So that's about writing social themes based story. Whenever you are writing personal stories, so try to write stories which include good amount of actions, which will say that you are an ambitious person. You also care about yourself, and you want to explore the limits of human. It can be in any other form, losing weight, or running, exercising, or winning any sports competition. Okay, even personal goals can be social goals, and personal goals can be professional goals also. So these are all three sets. They sometimes happen simultaneously. There is sometimes interjection. There is sometimes inclusiveness. There is sometimes exclusiveness in all these nature of stories. Now coming over to professional stories, it says that you are a person who have high work ethic. You take your work seriously and passionately. So this is about themes of the story. Now you have perceived your story. अभी हम बात करते हैं स्टोरी की फॉर्मेशन कैसे करनी है. जब आपने फिलहाल पिक्चर में देख लिया कि क्या हो रहा है, तो आपको बैकग्राउंड बनाना है. बैकग्राउंड बनाना है. बैकग्राउंड बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो नीड है, आपको जो स्टोरी में आप कर रहे होगे उस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है, या फिर आपने जो एक्शंस, मतलब बेसिकली आपको वाई बताना है कि जो आप एक्शंस कर ले रहे होगे प्रेजेंट में, आप क्यों ले रहे हो, उसके पीछे का वाई बताना है. और वाई में आप एक स्टोरी बता सकते हो, उसमें आप इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन की. वो आदमी यहाँ से यहाँ गुजर रहा था, उसने ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व की, या फिर वो ये करता था, उसने ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व की. ठीक. इट कैन नॉट बी प्रॉब्लम ऑल्सो, इट कैन बी एन आइडिया ऑल्सो, कि वो यहाँ से यहाँ गुजर रहा था, उसे उसको ये आइडिया आया कि चलो ऊबर बनाते हैं, या फिर उसको ये आइडिया आया कि चलो हम एक संडे पे सारे दोस्तों को बुलाकर इस बीच को साफ करते हैं. ठीक है, या फिर इस ग्राउंड को क्लीन करते हैं, या फिर इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाते हैं. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग. तो इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी a solution to the existing problem, or it can be like whatever your story is going to based upon. Let me repeat, I have learned from this some from a online interview, that you are going to create something, or sometimes you are going to innovate something, or sometimes you are going to improve some existing situation. So whenever you see any situation in front of your eyes, these three words must ring inside your head, and you must ask yourself whether I can create anything, or innovate something, or improve something given in the picture. So this is about theme formation. So now you have written the introduction part, and it should be done in 2-3 lines, and it should be including most important part of the introduction part is that you are justifying the importance and the significance of the actions which you will be taking. Is that you are telling about the severe need, dire need of whatever you are going to do in the present moment. Okay, then you will take actions. Now while writing actions, you have to be very pragmatic and logical. You don't have to specifically, like psychologists do say that you have to write thoughts and emotions behind writing those actions too. But as you have already covered them in the introduction part, now please just focus on writing actions, that he did this, and after this he did this, did it, like ABCD, these 4 steps he did, 4 actions he took,
While taking actions, do not forget to include other people also, taking help from other also. I'm not saying you to do this in every particular story, but including teamwork will say that will say for you as a candidate that you are accepting the fact that other people can also be helpful and can also be good and better than you at their work, and you are also open to take help whenever required. You are not an egoist person, and you also have to do things and work by yourself. It will say that you are a hardworking person. So now that you have already taken action, and also I have listened to this advice somewhere that whenever you are writing actions and particular actions from for other characters which are there in your stories, also they are also qualifying and telling something about your character in some personality aspects. They are exposing your personality also. So it is just not the protagonist of the story, but other characters of the story which speaks for you in front of the assessor. So this is about action part, and you have to take exactly certain logical and practical actions which will be able to give out good results which you want to bring out. In the conclusion part, as you have done work, so there must be some optimistic and logical and achievable results, एंड दोज रिजल्ट शुड नॉट बी, क्योंकि हम देखो जीवन में कोई भी काम करते हैं और आइडियली हमें कोई भी काम इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ वो काम करना है, ठीक है। अगर हम लाइक फॉर से अगर हम किसी ओल्ड वुमेन को रास्ता क्रॉस करवाते हैं तो हम क्यों करवाते हैं? एनीवन? हम इसीलिए करवाते हैं कि रास्ता क्रॉस हो जाए। यस भाई। यस डेफिनेटली, हम रास्ता इसीलिए मतलब वो क्रॉस करवाते हैं कि रास्ता क्रॉस हो जाए। हम किसी की हेल्प इसलिए सॉरी, मैं ना वर्ड्स को लैग कर रहा हूँ क्योंकि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा था, पहले वाईएमए पे डेमो दिया, फिर लेक्चर था दिस। ओके, सो हम कोई भी काम इसीलिए करते हैं कि वो काम हो जाए। हम किसी की हेल्प इसलिए करते हैं कि उसकी हेल्प हो जाए। दैट्स इट, हमें बस इतना ही करना होता है। वी डू नॉट हैव टू राइट इट दैट हमने रास्ता क्रॉस करवाया फिर कंक्लूजन में हम लिख रहे हैं कि उन दादी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है, 500 का नोट दिया। नो, ओके, वी जस्ट हैव टू राइट कि हमने जो काम किया वो काम पूरा हो गया, हम खुश हैं उससे। दैट्स इनफ फॉर अस। एंड हाँ, हम ये हो सकते हैं कि हमने जिस टीम की हेल्प ली थी हम उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। और पता है जब भी हम ग्रेटिट्यूड किसी को दिखाते हैं, हम जब किसी को एक्चुअली में थैंक यू बोलते हैं ना, तो हमारी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है और हमें बिलीव होता है। जब भी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हमें एक अंदर से एक इमोशन, एक फीलिंग, एक थॉट आता है कि अदर लाइक दिस पर्सन इज हाउ गुड। ओके, लाइक मुझे याद है कि लाइक on this teacher's day when I was writing text to my chemistry teacher ki thank you sir for beating me up in class 10th when I cheated. So I was literally having very gratitude, and at the same point of time it was a blissful feeling and it was a thankfulness for the past. It was amazing, it was very satisfying. So हम कंक्लूजन में हमारा हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा ग्रेटफुलनेस, हमारा ग्रेटिट्यूड टू अवर टीम, द ग्रेटिट्यूड टू द एनवायरनमेंट, वी कैन एक्सप्रेस दैट एंड वी कैन बी हैप्पी अबाउट दैट वी हैव अचीव्ड द टास्क वट एवर वी वांटेड टू डू, दैट वी डिड, दैट्स इट ओनली। ओके, तो हमें कर्म के लिए ही खुश होना है कंक्लूजन में, और कर्म का फल बताना है कि ये चीजें हो गई। और वाइल टेलिंग ऑल्सो वी डू नॉट हैव टू बी इगोइस्टिक. So with the help of team, the team achieved this. तो हमें ऐसे लिखना है. Okay, this is also a leadership quality that whenever there is some like एक गंदा वर्ड आ रहा है, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, हाँ ब्लंडर, कभी कोई ब्लंडर हो जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडर लेते हैं। अगर कोई अच्छी चीज अचीव कर लेते हैं तो क्रेडिट पूरी टीम को दिया जाता है कि पूरी टीम ने अच्छा खेला, पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स व्हाई। Okay, so this is about conclusion. And now, as we think about the psychology, real psychology of our minds, then हमें ना हमेशा लाइफ में थोड़ा सा
हटकर देखना होगा चीजों को, हमें थोड़ा सा खुद से परे होकर सोचना होगा। पता है व्हाट इज ईगो? इन साइकोलॉजी व्हाट इज ईगो? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद सेल्फ इज ईगो। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। हमारी गीता में भी ये लिखा हुआ है कि हम माध्यम हैं सिर्फ, जो भी काम हो रहा है। तो द आइडेंटिफिकेशन whenever we identify ourselves as good or bad, it is ego। अगर हम खुद को अच्छा या बुरा समझते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को किसी कैरेक्टर ट्रेट के साथ। ठीक है, एनीवेज, सो whenever we are solving some problem, we have to have a good reason for solving that. While solving, we have to take right actions, appropriate actions, and in those actions, if we are taking help of fellow humans, there is no problem in doing that whenever it is required. Whenever it is not required, we will not have to take unnecessarily help, because that will also say that we are very dependent on other people. We cannot do simple tasks by ourselves. So this is very ambiguous advice which I am giving to you. You have to like अब आज हमने जितनी भी बातें डिस्कस की वो सारी बेसलेस हो जाएंगे अगर आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। तो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा था, अगर आपने रिलेट करके समझ पाए, दैट विल बी वेरी वंडरफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें दूसरों की हेल्प लेनी है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो हम हेल्प ले रहे हैं, दैट्स गुड। जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, हम खुद से कर सकते हैं, वहाँ हेल्प नहीं लेनी है। सो द कॉन्टेक्स्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो हमने एक्शन लिया कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम सोल्व इसलिए की क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करनी थी, दैट्स इट। So this is about writing this is about formation of a complete story. Is there any doubt in the formation of the story? And after this, taking these doubts, we will be discussing about how we can write 12 stories and how we can optimize our time, how we can more efficiently use our time, those 55 to 56 minutes, so that we will not end up losing some space or losing some marks in TAT. Is anyone having any doubt related to formation of story? Anyone? No doubts? Okay, so there are some remaining tips also. Like we have to majorly focus on what is going on in the picture. जो हम actions ले रहे होंगे, हमें actions पे ज़्यादा विश्वास रखना है, हमने actions पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो हम स्टोरी में खुद से कर रहे हैं। अदरवाइज इंट्रोडक्शन तो एक कहानी है जो पहले हुआ, कंक्लूजन एक फल है। तो हमें इन दोनों पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए ज़्यादा फोकस हमें अपने कर्म पे करना है। तो हमें फोकस करना है कि हमारे सेंट्रल जो कैरेक्टर है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसके एक्शंस हम मैक्सिमाइज करें और उससे ज़्यादा काम और मेहनत करवाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन। हमें जो गिवन रिसोर्सेज है पिक्चर में, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। पिक्चर में दी हुई हर चीज़ को, हर ह्यूमन रिसोर्स को, हर रिसोर्स नहीं पर ज़्यादातर जो रिसोर्स हमारे काम आ सकते हैं, हमें उन्हें काम में लेना है, ताकि ये दिखाया जा सके या फिर ये लगे साइकोलॉजिस्ट को, या फिर ऐसा हो भी कि हमने पिक्चर से कहानी बनाई है, हमने कहानी को पिक्चर से रिलेट नहीं किया, हमने पिक्चर से कहानी बनाई है। द स्टोरी शुड बी कमिंग आउट ऑफ द पिक्चर। ओके, और हमें स्टार्टिंग में जैसे हमने पहले कवर किया कि हमें थॉट्स, फीलिंग, मोटिवेशन और इंटेंट बताना है स्टोरी के स्टार्टिंग। और हमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसे एम्पावर करना है, जहां भी जैसे हमने पहले बात की थी, थीम प्लस गोल इक्वल्स टू एम, सॉरी थीम प्लस प्रोफेशन इक्वल्स टू गोल। तो हमें थीम और हमारे प्रोफेशन को अलाइन करते हुए हम एक बड़ा गोल हासिल कर सकते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट हो हम ये वाले ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, कीप इट पॉजिटिव रखनी है पूरी स्टोरी को, और पॉजिटिव ही कंक्लूजन लाना है। एक भाई ने बहुत अच्छी बात की थी, नेगेटिव से न्यूट्रल लाना है, न्यूट्रल से पॉजिटिव लाना है। और हाँ,
जैसे हमने पहले बात की थी, बहुत सिंपल टिप है कि आपको सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर को, सिर्फ मेन कैरेक्टर को नाम देना, बाकियों को नाम नहीं देना। जैसे लाइक से राधा एंड हिज फ्रेंड, सॉरी राधा एंड हर फ्रेंड, राधा एंड हर ब्रदर, we can write it and address other characters using this words and phrases. Okay, so let's now discuss about blank story. Yeah, is everyone alive या फिर सो गए? चलो एक बार सभी माइक ऑन करके अलाइव अलाइव बोल दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भी चिंता हो, आवाज भी सुन सकूं। ओके, मैं भी जिंदा हूँ। So let's continue our discussion about blank story. So the concept of blank story is a kind of tweaked in SSBs, because it was considered to be that you have to imagine a story of your choice in that particular scenario when you have already written 11 stories and you have some information and you have some psychological priming in your head. But now as all the candidates take their stories, जब मतलब ये कहते हैं ना कि अब जब हमें पता ही है क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो आंसर क्यों ना प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, अच्छी बात है, करके जाओ प्रिपेयर। तो हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैंक स्टोरी आप क्या बना सकते हो। ब्लैंक स्टोरी आप अपने पर्सनल किसी, जो आपको लगता है कि ये मैंने अच्छा टास्क किया, ये सोशल भी था, या फिर बहुत अच्छा है, या फिर मतलब दिस इज ऑफ हाई लेवल आइडिया, तो आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस पर, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया होगा, टीम को जिताया होगा, या फिर आपने कोई पर्सनल गोल के लिए काम किया होगा, प्रोफेशनल गोल के लिए काम किया होगा, सोसाइटी के गोल के लिए काम किया होगा। रिमेंबर, थीम्स मैटर बट एक्शंस मैटर मोर। ओके, actions matter more, because when you are bringing qualitative actions, then you will have more fruitful results. Okay, so आप कोई भी अपने रियल लाइफ से रिलेटेड ब्लैंक स्टोरी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे कोई इवेंट मेरी जिंदगी में याद नहीं आ रहा जो मैं ब्लैंक स्टोरी बना पाऊँ, तो आप इमेजिनेटिव स्टोरी भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया घूमते रहते हैं, तो आप वो स्टोरी भी लिख सकते हो। इट्स नॉट ए एडवाइस विच आई शुड गिव यू, बट मैं बता ही देता हूँ, आपको 2-3 स्टोरी प्रिपेयर करके जाना है ब्लैंक स्टोरी के लिए, क्योंकि कई बार हो सकते हैं कि वो स्टोरीज हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो आप 2-3 स्टोरी प्रिपेयर करके जा सकते हो। जैसे अगर मैं हूँ, तो अगर मैं चाहूँगा तो मैं मैवरिक्स पे एक स्टोरी लिख सकता हूँ, एक मैराथन पे लिख सकता हूँ, एक मैं लाइक होस्टिंग सेशन विद नटराजन सर उस पे लिख सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट वाज a major event in my life. Anyways, so that's my personal thinking. So that can be different for you, and that is very subjective for you. So you can write things and write story on your real life past events. So any doubts about blank story? और हाँ, एक दो टिप्स और, अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। और एक दो टिप्स और, आप अपनी ब्लैंक स्टोरी को थोड़ा लंबा बना सकते हो, क्योंकि आप उसे रट के जाओगे तो आप जल्दी लिख सकते हो, और जब आप ब्लैंक स्टोरी लिख रहे होगे तो आप ब्लैंक स्टोरी जल्दी से कंप्लीट कर लो, और फिर जो बाकी जो स्टोरी में अगर एक दो लाइन कहीं पे छूट गई, तो आप पीछे जाके उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और ब्लैंक स्टोरी को थोड़ा मतलब और जब आपने प्रिपेयर कर लिया तो रट्टा मार के अच्छे से जाओ, ताकि वहां जल्दी से लिख दो, और यस दैट्स इट। और उसकी प्रैक्टिस करके जाओ बहुत पहले से, और उसे ना बार बार रिफाइन करते रहो, रिव्यू करते रहो, हर एक वर्ड उसका इम्प्रूव करते रहो। दैट्स इट। सो एनी अदर डाउट रिगार्डिंग TAT? नो डाउट्स? यस हिमांशु। देखो भाई, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बता नहीं पाऊंगा। बाकी अगर आप प्री मेडिटेटेड स्टोरी लिख के जा रहे हो तो उसके बारे में बताया था मैंने।
अगर आपको वहाँ स्टोरी लिखना पसंद है तो आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप मुझसे ऐसे मतलब मेरे लिए एडवाइस मांगो कि मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं खुद के लिए क्या प्रेफर करूँगा, तो मैं स्टोरी पहले से बना के ले जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इतना थका हुआ हूँ 12th स्टोरी के टाइम पे। यस यस एम के, यस यस एम के गुप्ता। Yes, MK Gupta, speak, unmute yourself. Okay, so now let's move on to strategical part of TAT. TAT 55-56 मिनट का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है। AFSBs में आपके सेम डे होता है, तो AFSB में ट्राई करो। अगर आपको नींद भी नहीं आ रही तो आप फिर भी कंबल ओढ़ के थोड़ा सो लो, ठीक है, क्योंकि बीच में 1-2 घंटे का टाइम मिलता है। तो प्लीज ट्राई टू स्लीप इन दोज 1-2 hours and please try to remain in a positive, calm, composed mood before going to psychological testing. And keep your thoughts clean and do not pressurize yourself. Believe on how you have prepared. अब prepared वर्ड आ गया तो हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि टीईटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर स्टार्टिंग, अगर किसी ने टीईटी एक बार भी जीवन में नहीं लिखा है तो स्टार्टिंग में 12 स्टोरी लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यू कैन स्टार्ट विथ 3 स्टोरीज 3 दिन के लिए लिखो, फिर अगले 3 दिन में 3 स्टोरीज और बढ़ा लो और 6 स्टोरीज लिखो, हाफ टीएटी प्रैक्टिस करते रहो। फिर 6 दिन बाद में आप पूरा 9 टीएटीज लिख सकते हो, फिर आप 12 टीएटीज मतलब 2 हफ्तों में 12 टीएटीज पूरे 12 स्टोरीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड वन मोर टिप दैट यू कैन प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली, लाइक मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड, we used to practice, like we used to make a set of 11 pictures, and in that same particular time, like we will start at 11 a.m. in the morning, and on 12 a.m. we will send our picture of our stories to each other, and we will review each other's stories and will refine those stories, so that can help us. So you can make SSB buddies with you, which will help you to be more consistent, and you can be like mutual critiques, so that you improve your quality of story and responses. Because most of the time what we think is we have some pre-confirmation bias to approve our stories. Okay, so you can have this method to improve your writings in your stories. Now for handwriting, so you have to write in a simple manner. If you have a bad handwriting like me, so try to not connecting letters with each other and try to write like words के बीच में एक proper space, एक regular space लगाने की कोशिश करो कि 2 words के बीच में मैं इतना space ही रखूंगा, है ना। So that can make your writing more uniform. और जो साइक का डोजियर होता है उसमें लाइंस खींचनी होती है ओरिजेंटल, तो आपको प्रैक्टिस करना है ब्लैंक पेजेस पे जहाँ पर लाइन नहीं होती जिस रजिस्टर में। सो प्रैक्टिस ऑन दोज रजिस्टर्स। और हाँ, स्टोरी कोशिश करो कि आप बड़ी स्टोरीज लिखने की कोशिश ना करो। जैसे आपको अगर 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई गई, अगर आपको पिक्चर देखते ही पूरी स्टोरी दिमाग में बन गई तो स्टार्ट कर दो लिखना, ठीक है। पर अगर आपको 30 सेकंड देख लिया आपने पिक्चर में, फिर भी आपको सिर्फ आइडिया मिला है, पूरी स्टोरी नहीं दिमाग में बनी, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये एक बार आप दिमाग में पूरी स्टोरी बना लें, एक बार मतलब स्ट्रक्चर बना लें कि ये करना है, फिर आप स्टोरी लिखें तो आप बेटर लिख पाएंगे, ठीक है। ट्राई टू राइट स्टोरी ऑफ 100 to 110 वर्ड्स, एंड आई से आप छोटी स्टोरीज भी लिख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी लिखने से पहले यू हैव टू बी आर्टिकुलेट while speaking in everywhere, you have to be very succinct while writing and writing the stories, because once it is written, it is written. Okay, if you are going to cut it, then you are going to cut yours. Sorry. So ध्यान रखना है आपको लिखते वक्त कि आपको पूरे टेंशन से लिखना है।
और आप कटिंग वगैरह वहाँ नहीं कर सकते। सो मूविंग एंड, यस, सो 30 सेकेंड्स में आपने पिक्चर देखी, आप 10 सेकेंड्स ले सकते हो स्टोरी स्ट्रक्चर करने में, आप 20 सेकेंड भी ले सकते हो। आपने स्टोरी लिखी अच्छे से, फिर आपने नेक्स्ट स्टोरी अच्छे से परसीव करी, क्योंकि आपने स्टोरी अच्छे से लिखी है, ससिंक्ट मैनर में लिखी है। After observing and perceiving the next picture, you have written the next story, and next and next and next and next and next and next. ब्लैंक स्टोरी लिखते वक्त आप जल्दी से आपकी ब्लैंक स्टोरी लिखो, पीछे जाओ, कहीं पे एक दो लाइन कहीं भी छूट गई तो उसे कंप्लीट कर दो। और ये ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको स्टोरी लिख रहे हो, नेक्स्ट पिक्चर आ गई स्क्रीन पे, तो छोड़ दो भाई वहाँ स्टोरी, क्योंकि आपको पता है कंक्लूजन में तो आप कभी भी आके पूरा लिख सकते हो, थैंक यू टीम, आई वॉज वेरी हैप्पी, या आप वापस आके कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पिक्चर को ऑब्जर्व करना काफी जरूरी। और एक और बात ध्यान रखो कि कभी भी पीछे स्टक नहीं रह जाना है। जैसे आपने पहली स्टोरी, सेकंड स्टोरी जब आपके सामने प्रेजेंट है, तो दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि यार मैंने फर्स्ट स्टोरी अच्छी लिखी है खराब लिखी। नो, प्लीज डोंट असेस योरसेल्फ। देयर आर असेसर्स सिटिंग एंड हैविंग good amount of salary to assess you, so please don't assess by yourself. Okay, leave their job to themselves, and you just be focused on the present moment, and whatever the task is in the hand, just focus on that. Keep giving your good level of attention and good level of work to the task which is on in your hand. So whenever the next picture comes, do not think about the previous story. Even if it got uncompleted, don't just think. You just have to perform better and better in every task, because there's just not one task which is going to recommend you or conference out you from that particular board. So you don't have to worry much. You just have to be very much attentive about the what is happening in the present, because if you won't be performing the present moment, you have already done blunder in the past, you are doing blunder right now, and you will continue to do the same in the future also by thinking about the past. So it's not a wise thinking to keep on thinking about unreal things, because past and future are just unreal. What is real is there in the present moment, is the present moment itself. So you have to just focus on that and keep on giving your good level of attention and good level of work. I'm not saying best, keep giving your best, because best is also a kind of a comparison thing. We tend to judge ourselves that has we had we given our best or not. So don't think about that, just have to be normal and just focus and be believe in yourself and believe in your preparation. Just express yourself there, not assess yourself. Okay, so this is about writing TAT. I guess I have covered all the aspects. Is there any doubt? Yes, ask. Yes, I'm clear. हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्या? मैं करता हूँ भाई। Welcome. Any other doubts? Okay, so we started with like around 40 or 44 people. Now there are 12 only. But I understand also they have to sleep early because they have to get up early in the morning. So it's completely okay. They can watch the recording later if they don't want to watch it. No problem then also. Yes, anyone raise their hand? Sorry. Okay, no doubt. Shall we conclude our session? Yes. अगर करने ही पड़ रहे हैं तो कर दो, but I'll still repeat the sentence. Prevention is better than cure. हाँ, prevention is better than cure. तभी तो बोलो ना, स्ट्रक्चर पहले दिमाग में बना लो फिर लिखो, फिर सही चलेगा फ्लो ऑफ थॉट्स. Any other doubt?
Okay, thank you everyone for joining. Let us conclude. Yes, Kanu? हाँ, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि आपको आइडिया क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में स्पेस नहीं है। आइडिया कहाँ से आएगा? मतलब अगर एक रूम है पूरा भरा पड़ा है, तो उसमें आइडिया दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा, अंदर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि जगह नहीं है। क्योंकि आपने दिमाग में आपने बहुत ज्यादा थॉट्स भर रखे हैं, आपने स्ट्रेस ले रखा है बिना बात का, इसलिए आपको आइडिया नहीं आ रहा। तो आइडिया नहीं आ रहा उसका कोई कारण है कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, आप मेंटली फटीग्ड हो। ठीक है, तो मेंटली फटीगनेस तो आती ही है, पर आपको वरीनेस और स्ट्रेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है पिछले टास्क और पिछले स्टोरीज का। ओके, तो आप ब्लैंक आउट नहीं होगे। अगर आप स्टिल ब्लैंक आउट हो गए, बट स्टिल आई विल रिपीट वन मोर सेंटेंस, द सेम सेंटेंस, दैट फ्रेंड्स इज बेटर देन कोड। बट स्टिल अगर आप हो गए ब्लैंक आउट, तो स्टिल आपको 30 सेकंड्स के बाद में याद रहता है कि व्हाट वाज द पिक्चर। तो आप शांति से 30 सेकंड बाद सोच सकते हो कि मैं इस पे क्या स्टोरी बना सकता हूँ। फिर आप 6-7 लाइन की कोई छोटी स्टोरी बना दो, नॉर्मल सी, रिलेटेबल हो, रियल लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक, जब भी आपको ऐसे फंस जाओ ना कहीं पे, तो रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी बना दो कि आपने मम्मी के लिए खाना बनाया या फिर आपने घर में सफाई कर दी। सो ऐसे छोटे मोटे काम पे आप स्टोरी बना सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो है ब्यूटीफुल थिंग। यस सागर? नो 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 नो, सेम स्टिमुलस कभी नहीं होता। वो आप परसीव करते हो कि सेम है, बाकी आपको सिमिलर स्टोरीज तो नहीं बनानी आई गेस। अगर आपको स्टिमुलस, अगर आपको देखो वर्ड भी सेम मिल रहा है ना कई बार WAT में, तो आप स्टिल बहुत सारे आइडियाज होते हैं, आप दूसरों में बना सकते हो, तो इट्स बेटर। वेलकम। So shall we conclude this session right now? Okay. Thank you everyone for joining. Thank you for your attention. Thank you for the attention. I hope I contributed a little and it was a really great session. You have been a great audience and learners. Thank you. Jai Hind. Good night.